streaming now. Okay. Very good afternoon, all of you. So let's start off. My name is Dimple Nankani. I'll be taking portion of geography for you in your GS. How many? Very first question. How many of you don't like geography? बड़ी ही नफरत है. नहीं. Please keep your hands up. Let me just see. ठीक, fine. So 10-15 of you there. My target is to convert you and into the liking. जो hatred है या जो disliking है उसको liking में convert करना. Why don't you like geography? Reason? Okay. Anybody else? यहाँ पे हाँ, you raised your hand. बताओ. Okay, fine. Anybody else? Okay. Particular portion in geography I don't like. Yes. वो सब्जेक्ट ही ऐसा है, आपकी गलती नहीं है उसमें. इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर. कैसे समझ पाओगे? वेरी कॉम्प्लेक्स नो. ठीक है, फाइन. आई विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट देयर. So if I talk about geography, there are 2-3 things that we talk about in geography as a subject also. जब subject की बात करते हैं, voice is less. Mic. Okay. So when I talk about geography as a subject, there are 2-3 things that you need to understand. Geography is not about only maps. ठीक है. We actually think कि हाँ एटलस पूरी याद है, इसका कैपिटल याद है तो geography अच्छी है. No, that is not geography. That is a part of geography. That's the idea, that's the liking, that's the notion that we have for a subject. तो पहले तो वो बात को क्लियर करेंगे. What is geography? Geography का अपना कोई सिर्फ एक स्पेसिफिक डोमेन नहीं है. Geography is it's like it will take something from geology, the interior of the earth. It will take something from meteorology, the climate. It will take something from ocean studies. We will study ocean. It will take something from the environment, the environmental geography. थोड़ा बहुत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन एंड दी डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स. तो आपका यू विल देयर आर डिबेट्स, राइट? इंडिया को फर्टिलिटी रेट कितना कम करना चाहिए, कितना ज़्यादा चाहिए, व्हाट पॉलिसी डू वी नीड. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी? नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी? ओके, राइट. सो आई कैन हैव दिस बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन, राइट, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में. तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं दैट फर्टिलिटी रेट कितना है, कहाँ ज़्यादा है, कौन से स्टेट में ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है और उसका क्या इफेक्ट होगा, व्हाट पॉलिसीज डू वी अडॉप्ट. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. एंड इन योर जीएस पेपर 1 देयर इज ओवरलैपिंग विथ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड योर सोसाइटी. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ज्योग्राफी. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ज्योग्राफी में देयर इज नो वन पर्टिकुलर थीम. सिर्फ एक थीम नहीं है. एंड दिस इज यू विल ऑल्सो सी इन योर क्लास 12th एनसीईआरटी, क्लास 11th एनसीईआरटी, द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. उसमें पहला चीज और पहला डायग्राम ऐसे बना हुआ है. दिस इज ज्योग्राफी. इट हैज ओवरलैपिंग विथ जियोलॉजी, इट हैज ओवरलैपिंग विथ मीटरोलॉजी, इट हैज ओवरलैपिंग विथ ओशन स्टडीज, इट हैज ओवरलैपिंग विथ एनवायरमेंट स्टडीज. फ्रॉम सोसाइटी इट टेक्स पॉपुलेशन ज्योग्राफी. फ्रॉम द settlement you have settlement geography. From your PSIR, the political one, you have your political geography. From the developmental studies you have economic geography. तो ज्योग्राफी का अपना कोई माई बाप नहीं है. ठीक है, वो सब कुछ सबसे लेते हैं. तो ज्योग्राफी डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ज्योग्राफी? डिफरेंशिएशन ऑफ ज्योग्राफी इज व्हाट डू यू गेट, वेयर, व्हाई एंड सो व्हाट. आई विल जस्ट रिपीट. व्हाट इज वेयर, what is where, why and so what. This is geography. कोई चीज कहाँ पे है, क्यों है और उसका असर क्या हो रहा है. That is the interlinkage aspect. How is mountain, for example Himalayas, how are Himalayas a geographical division between China and India? How is so physical setting. How is Himalayas affecting the climate of our country? How is it affecting monsoon? How is it letting India be a little more warmer country? ठीक है, so Himalayas का link with the climate. What are the resources that you find in Himalayas? We find oil and gas, we find building material.
And so what if you find oil and gas in Himalayas? So what is the impact of it? So this is your geography. यानी interlinkage. The subject matter is not very special to geography, but the concept of interlinking across various things, that is your geography. What is where? कोई चीज कहाँ है, क्यों है, why, and so what. This is the interlinkage that you need to develop in the subject. ये overall academic side से बता रही हूँ कि geography क्या है. You will, and why am I telling you this in the very first classes? Because you should not ask me in the class, ये क्यों पढ़ रहे हैं geography में, ठीक है, because ये सब कुछ geography में है. Academic side of geography. One. Second, when I'm, अच्छा, okay, fine. Love for subject is one. If love for subject होता तो फिर optional में होता. But then we are in the GS class. मैं क्यों पढ़ रही हूँ geography? मैं क्यों पढ़ रहा हूँ geography? I am studying geography because I want to qualify an examination. Qualify an examination, for that purpose I am studying geography. So you should have a very clear understanding of the needs of the examination. Examination को क्या चाहिए? What does the examination demands for me? I like studying this subject, that is fine. I might not like studying this subject, that is also fine. But still एग्जाम पास करनी है तो थोड़ी दोस्ती तो करनी पड़ेगी. बहुत ज़्यादा नहीं होगी, किसी से कोई सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कोई सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी, दैट इज फाइन. सो what is the need of the examination, that also you should keep in mind. There are 3 stages in the examination. In those stages में geography ज़्यादा important हो जाता है, prelims and mains. Interview में तभी पूछेगा if you have your option, otherwise it is your geography which is a part of your prelims and mains examination. ठीक है, if I will not oversell the subject, I'm not here for that. ठीक है, prelims में अगर if I have to see, I'm just doing the profiling. Profiling prelims में what kind of questions are asked? One, certain type of questions are conceptual questions, and certain types of questions are factual. Factual questions are mostly related to mapping part, the India part, and the world mapping part. So you have mapping part, India mapping and world mapping. Congo कौन सी कंट्री से पास नहीं होता है, वर्ल्ड मैपिंग फैक्चुअल, ठीक है. तो इसके लिए एक अलग टेक्निक लगती है, इसके लिए एक अलग अप्रोच लगता है. व्हेन इट इज फैक्चुअल पार्ट, व्हाट डू यू नीड, व्हाट टेक्निक डू यू नीड? द टेक्निक डू यू नीड टू हैव अ पिक्चरिस्क मेमोरी. ईदर यू ड्रॉ एंड डेवलप दैट मेमोरी. कॉन्गो बता दिया कहाँ से, यू नो द मैप ऑफ अफ्रीका, you know where does Congo passes from, you understand the countries of Africa. So for that you need to have picturesque memory. That means you will draw and learn, or this is factual तो उसको learn करना है. So you will draw or learn, or you can develop certain tricks जो market में भी सबसे ज़्यादा चल रहा है, mnemonics, short forms. So you learn via some short forms, or you can also remember the facts via looking at the atlas time and again. Or so either you draw or you continuously at least let it go through your eyes. सामने आंखों के सामने से बार बार जाए, या तो फिर हम ड्रॉ करें या तो फिर हम कोई शॉर्ट फॉर्म्स बनाए. सबसे फुल प्रूफ तरीका कौन सा है? ड्रॉ डिपेंड्स, तीनों करो, ठीक है, तीनों ही करो. Keep on, if you have once drawn, keep on looking at it, keep on adding on it, and if you can develop certain mnemonics too for your own self, we will also share some tricks. But then if you invest into your short forms, you remember them. I remember my short forms because I have put energy into it. I can communicate, I can tell you, some of you might like it, some of you might not like it. If you like it and you invest, you will learn. If you don't like it, you can make your own. जिसमें एनर्जी डालोगे वो चीज याद रहेगी, जिसमें एनर्जी डालोगे नहीं तो वो चीज याद नहीं रहेगी. This is a lesson even for your test. While you are solving the test, if there are 10 questions, right, आपने you've not studied, let's say there are 20 questions you've not studied and you are like I have not studied, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, छोड़ो, अरे ये तो आता ही नहीं, पता नहीं, अरे ये समझ नहीं आ रहा, छोड़ देंगे, वो MCQ कभी याद नहीं रहेगा. You will never be able to remember if you have left an MCQ. ये नहीं पढ़ा है, चलो कोई लॉजिक लगाते, कोशिश करते हैं, नहीं पढ़ा है, आपने जहां एनर्जी उसमें इन्वेस्ट की वो MCQ याद हो जाएगा, वो चीज याद हो जाएगी, वो कंसेप्ट याद हो जाएगा. तो मोमेंट यू हैव नॉट गिवन एन एनर्जी, यू विल टेंड टू फॉरगेट दैट. ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू विल ऑल्सो नो कि कैसे याद करें. एटलीस्ट ड्रॉ, कीप ऑन एडिंग बाय लुकिंग एट योर एटलिस्ट, एंड इफ यू कैन डेवलप सर्टन निमोनिक्स फॉर यू, और इफ यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम द निमोनिक्स दैट वी शेयर, दैट इज
दैट यू विल हेल्प रिमेंबर इजी. तो क्या फुल प्रूफ है, तीनों करना है. ठीक है, दिस इज अबाउट द फैक्चुअल पार्ट. अबाउट द कंसेप्चुअल पार्ट, in prelims there are some questions which are factual, there are some questions which are conceptual. Factual questions are mostly mapping questions, India mapping, world mapping. But ये सिर्फ geography नहीं है. Geography is about developing the concepts. If you take into consideration the questions that came in 2023 prelims examination, P wave and S wave, they asked a question on, not directly on greenhouse gases, but they linked greenhouse gases to the spectrum, electromagnetic spectrum, and then they asked the question on. It was not a tough question, but it was more of an application based question. So geography में दोनों चाहिए, conceptual clarity भी चाहिए. This is what you will see in the first 4-5 units, like physical geography, like climate geography, like ocean वाला geography, वो आपका conceptual clarity लगेगा. So this is about your prelims examination. As far as mains examination is concerned, here in the mains examination, geography से जो interlinkage बनती है, that helps you in your GS1. If you have covered the human geography part also, that helps you in your society answers. If I talk about mains in GS paper 3, agriculture, irrigation, port development, geography वहाँ पे भी काम आती है. ठीक है, और geography आप interlink कर सको questions के बीच में, answers के बीच में, वहाँ पे भी काम आती है, because geography is about interlinkage. So it is about geography is a part of your GS paper 1, some portions of society, some portions of paper 3 like agriculture, ports, infrastructure, and your irrigation, environment and disaster management. Geography वहाँ पे भी काम आती है. एटलीस्ट यहाँ इतना तो समझ आ जाता है कि अर्थक्वेक कहाँ है, वॉल्केनिज्म कहाँ हो रहा है, और उसका रिलेशन क्या है, कि क्यों वहाँ पे होते हैं. ठीक है, तो दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आउटलुक कि इट इज नॉट सिंपली अबाउट मैप, इट इज ऑल्सो अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इट इज ऑल्सो अबाउट लिंकेज. तो ये ज्योग्राफी के लिए अप्रोच होना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं, ये भी ज्योग्राफी है. इसके अलावा इट इज नॉट जस्ट फिजिकल फीचर्स कि पेड़ पौधे, प्लेन्स, प्लेटूज कहाँ है, इट इज ऑल्सो अबाउट द ह्यूमन ज्योग्राफी. अब हिमालयस की बात कर रहे थे, तो कैसे हिमालयस वहाँ पे उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है. इफ आई टॉक अबाउट हिमालयस अ वेरी टॉल माउंटेन्स. 6 kilometer is the 4 to 6 kilometer is the average height. 8.8 kilometer is the highest height. So because it's very tall mountain, at the peak during winters it becomes very cold. As it becomes very cold, those nomadic tribes जो भेड़ चाल वाले होते हैं, जिनके पास भेड़ बकरी होती है, they cannot survive with their livestock. They cannot survive at the peak of the mountain. What do? They start migrating towards the valleys in the winters. While what happens summers में, again they can go back to their place. So Himalayas, the topography of Himalayas has affected what? Has affected the economy, has affected the migration of the tribe. इसको बोलते हैं transhumance. जब जो migration होता है, seasonal migration हो रहा है, पीक से लेके वैली पे जाना, वैली से लेके पीक पे जाना, that is called as transhumance. बहुत सारे tribes करते हैं, बकरवाल, भोतिया, ठीक है, गद्दी tribes, they actually do it. So your physical geography is affecting population. Your Himalayas height is affecting the migration of the population. तो linkage बन रही है physical की human के साथ. If you look at fishermen, कभी अगर fishermen की life देखी होगी, fishermen क्या करते हैं? रात को जाते हैं मछली पकड़ने, रात को मछली पकड़ते हैं और सुबह वापस आते हैं मछली पकड़ के. Around 3 o'clock, 2 o'clock, they go back, they go to the for fishing. They catch the fish and they come back in the morning time and then they sell the fishes, fresh fishes sell करते हैं, then वापस थोड़ा सोते हैं, then वापस रात को जाते हैं. तो ये जो लाइफ है फिशरमैन की, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का. यू नो व्हाट इज सी ब्रीज, लैंड ब्रीज? द सी ब्रीज इज व्हाट? द ब्रीज दैट इज कमिंग फ्रॉम द सी. लैंड ब्रीज इज दैट गोज फ्रॉम द लैंड. इस पे कब सी ब्रीज फ्लो होती है, कब लैंड ब्रीज फ्लो होती है? This is land, this is your ocean, this is your land, again this is ocean. During the daytime, during the night time, wind, breeze यानी wind is what? Wind क्या होती है? Horizontal movement of air from high pressure to लो प्रेशर, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है. एंड प्रेशर इज जनरली इनवर्स टू दी
टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर है, दिस लॉट ऑफ टेम्परेचर, वेरी वेरी वार्म, द एयर स्टार्ट्स राइजिंग, गरम, धरती गरम है, air will starts rising. As the air starts rising, what is the consequent pressure here? The consequent pressure is low pressure as compared to the surrounding. So what happens? Well, if this is the daytime, the land is very very warm. As land is warm, the air rises. The air rises, goes like this. So during the daytime, what do you have? You have the wind coming from ocean to land. Air rises. गरम था, हवा गरम थी, ऊपर उठ गई, गरम हुई, हवा ऊपर उठी, ऊपर जाके ये पैटर्न हुआ कि यहाँ से it is traveling towards this place, again from ocean it is coming to the land. So during daytime what do you have? Sea breeze. Opposite what happens in the night time when the land is very very cold. तो बहुत cold है, sinking हो रही है, ठंड है, ठंडा है तो high pressure develop हो रहा है, high pressure develop हो रहा है, comparatively ocean गर्म है, comparatively ocean गर्म है, तो यहाँ पे comparatively low pressure है, तो air is like this. So in the night time what is the wind? In the night time the wind is from the land to the sea, land to the ocean. So in the night time क्या है? In the night time you have land breeze, in the day time you have sea breeze. इसी की मदद से ही तो फिशरमैन जा रहे हैं, रात को जाते हैं फिशिंग करने, फैसिलिटेट कौन कर रही है? लैंड ब्रीज. दिन को आते हैं फिशेस पकड़ के, फैसिलिटेट कौन कर रहा है? सी ब्रीज. ज्योग्राफी अफेक्टिंग द लाइफस्टाइल, ज्योग्राफी अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑल्सो. फिशेस है, ज्योग्राफी है, ठीक है. तो इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स नॉट जस्ट कि पेड़ है, पौधा है, प्लेटू है, उसको याद करना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीजें लिंक्ड है. पहाड़ से लिंक्ड है ऑयल एंड गैस, कोल्ड माउंटेन से लिंक्ड है डिजास्टर्स, कोल्ड माउंटेन से लिंक है इकोनॉमी, कोल्ड माउंटेन से लिंक है माइग्रेशन ऑफ द ट्राइबल. ये है ज्योग्राफी. ये जो लिंकेज है दैट इज व्हाट इज योर ज्योग्राफी अबाउट. ठीक है. सो दैट इज द ब्रीफ अप्रोच की सब्जेक्ट को देखना किस नजरिए से है. व्हाट इज द अप्रोच दैट यू शुड अडॉप्ट व्हाइल यू आर गोइंग फॉर द सब्जेक्ट. ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट ऑफ. व्हाट हैव यू रेड फॉर ज्योग्राफी? अभी तक कुछ पढ़ा है? एनसीईआरटी कौन सी? 9th, 10th, 11th के पार्ट्स पढ़े. कौन से पार्ट्स पढ़े? ओके. फ्यू मेजर बुक्स. कौन सी वाली? ठीक है, फाइन. ओके. एनीबडी एल्स? और क्या पढ़ा है ज्योग्राफी के लिए? आपने तो बहुत पढ़ा है. अच्छा, रिटन 2 minutes. ओके. स्टेट प्लीज बताओ. व्हाट एल्स? 6th 7th की एनसीईआरटी. बाकी सबने 9th 10th 11th पढ़ ली, ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगी. ठीक है. व्हाट एल्स? 11th डायरेक्टली 11th से स्टार्ट किया. समझ आई थोड़ी बहुत? ठीक है. सी फॉर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के लिए सर बताएंगे, बट फॉर ज्योग्राफी पर से स्टार्ट ऑफ विद क्लास 6 एनसीईआरटी. सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन आए. ज्योग्राफी स्टार्ट्स नॉट फ्रॉम योर फिजिकल ज्योग्राफी कि डायरेक्टली हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ स्टार्ट कर दिया. ज्योग्राफी स्टार्ट्स फ्रॉम योर रिलेशन विथ योर साइंस, एस्ट्रोनॉमी, सोलर सिस्टम से. सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो सोलर सिस्टम इज गिवन ओनली इन 2 एनसीईआरटी, दैट इज योर क्लास 6 एनसीईआरटी एंड योर क्लास 11th एनसीईआरटी. क्लास 6 एनसीईआरटी और 11th एनसीईआरटी में सोलर सिस्टम दिया है. तो फॉर ज्योग्राफी व्हाट यू शुड डू इज क्लास 6 7 8 9 10 10th. ठीक है. 6 7 8 9 10th पढ़ना. इट इज अ इजी रीड. It is very easy read. From class 6 to class 10th, it is easy read and you can develop liking towards the subject from 6 to 10th. Then it comes your 11th NCERT. In 11th NCERT, there are 2 NCERTs, this and this. This is whole conceptual, India physical environment. This is conceptual as well as factual. ठीक है. इससे भी questions आते हैं, इससे भी questions आते हैं. But base के लिए class 6, 7th, 8th, 9th, 10th पढ़ो. ठीक है. It will not take much time. It will not take much time. कितनी क्लासेस चल रही हैं? अपनी क्लासेस 2 classes, 3 classes. How many of you are having 2 classes? Not many of you. बाकी सबका एक क्लास ही है, right? बाकी सब, I believe there is only 1 class for you. So for 2, there are not many who have 2 classes. करना क्या है? यही तो करना है. You have to attend classes and you have to complete. You have to start reading the books. ठीक है. So 6, 7, 8, 9, 10. What you can do is at least start reading and at least start appreciating the subject. For 6th NCERT, it will not take 2 hours, 3 hours. For 7th NCERT, it will take
3 to 4 hours. You started 9, 10th, 11th, तो 6, 7th, 8th तो बहुत ही छोटे NCERTs हैं, कुछ ज़्यादा. I believe 6th class NCERT, we all have done our graduation, right? It is not a big thing for us. You can complete it in 3 to 4 hours. It is a very easy read and not all the chapters have to be read. Maps पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, ईस्ट क्या होता है. That you will know. So my suggestion is नॉवल की तरह ही पढ़ो, but 6 to 9, 6 to 10th तो पढ़ो. Our classes generally start from class 11th to class 11th. The base that we have is class 11th NCERT, and then we build upon class 11th NCERT. What is there in every subject? You will see from class 6 to class 10th. The level is moderate or easy to moderate. But as you cross class 11th, as you cross from 10 to 11, the level increases. Directly आपका level काफी change हो जाता है. Why? Because see, class 6 to class 10th is general, everybody is studying, but class 11th is specialization. तो specialization होती है तो इसलिए level अलग हो जाती है. If you directly start from class 11th NCERT, there is little difficulty that you can have. So 6 to 10th पढ़े and keep on marking, keep on reading. We start from class 11th NCERT, the India physical environment. Okay. So let me start. This is class 12th NCERT, the human geography NCERT. The data is very old. In this NCERT, the data is very old. Census अभी तो हुए नहीं है 2021 वाले जो होने थे because of COVID, and then it is still pending. The last census that we had was 2011. ये NCERT में 2011 के पहले वाला डेटा है, ठीक है. So it is very old data. If you want to read something for your human geography, a good book is your Tamil Nadu textbook. Tamil Nadu textbook is a good part for your human geography, and questions have come from that book also. Last year there was a question गांडी कोटा कैनियन के ऊपर कि कौन सी नदी बनाती है. That image, that picture was directly taken from Tamil Nadu textbook. Tamil Nadu textbook history के लिए जैसे देखते हैं, तो geography it is also very nice, especially the human part. Physical part तो ठीक है, human part ज़्यादा अच्छा दिया है. So you can avoid these two NCERTs and you can rather refer your Tamil Nadu textbook human geography. ठीक है. So this is about one. एक और atlas है. I personally like Oxford more than Orion Black Swan, so I have referred Oxford for your reference. So these are the books for the reference there. Let me start off the topic. एक initiation किया है, ठीक है. So we'll start off with the solar system because the questions have been coming from solar system. So we'll start off with that. ठीक है. अच्छा, what is the preferred mode of studies? Do you like to write or do you like to go via handouts? How many of you like writing part? How many of you like handouts? The rest of you. So there's a tie. Handouts are more comfortable. लिखने में why handouts are more comfortable? That's the time save. How you are lazy. Mains में क्या से करोगे? ठीक है. तभी तो रह गया था. तो फिर you'll have to work there. ठीक है. We'll try to keep a mix for the first few lectures. Let's keep on writing, and then we can go as you say. For the first 2-3 lectures, नया ही है, so let's write down, and then from the 4th lecture, I believe we can take it up for your handouts. Okay. So let me start off. Give the heading universe. When I say we will deal with solar system and the other thing, what all topics do we have to cover? Okay. What should we cover? बताओ. We'll cover universe. We will cover solar system. In the solar system, there are few important terms that you should know. You should know what is an asteroid, what is meteor, what is meteoroid, what is pole star, what is a meteorite. I'm just doing the listing. ठीक है, पहले सुन लो. Solar system है. Solar system में you have this one. Done pole star also. You have, we say asteroid, comet. Okay, then you have the motions of the earth. The motions of earth, which is about rotation and revolution. So far as universe is concerned, a very important theory about the formation of universe is the Big Bang theory. As far as
solar system is concerned, there are many theories about the formation. One important theory about the formation is the nebular hypothesis, that there was a nebula, a cloud full of dust and gases. There was gravitational collapse. As there was gravitational collapse, there was formation of the solar system. The solar system has led to formation of the planets also. The nebula hypothesis है, ये सब आपका है. How many of you are comfortable with this? Please raise your hand. Okay, not many of you. Okay. So let us do one thing. Let's start one by one. We are starting off with universe. Please write. I will keep on explaining. I will keep on making you write. Okay. Any difficulty that you have, please you can also ask me. Universe. First point. It is a limitless expanse. It is a limitless expanse of space. It is a limitless expanse of the space surrounding us, which consists of solar system, stars and galaxies. Universe has, second one, universe has billions of, I'll just repeat the first point. First, it is a limitless expanse of space. बहुत बड़ा space है. Limit क्या है हमें नहीं पता. ठीक है. It is a limitless expanse of space. What does it consist? It consists of stars. It consists of the solar system. It consists of many galaxies. ठीक है. तो galaxy है, stars है, solar system है आपके universe में. Then I'm saying universe has billions of galaxies. Universe has billions of galaxies. And each galaxy has billions of stars. ठीक है. हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? Our galaxy is Milky Way galaxy. Our galaxy is Milky Way galaxies. What can be the shape of galaxy? Galaxy का shape क्या हो सकता है? It can be spiral. It can be spiral. It can be elliptical. It can be irregular. It can be spiral. It can be elliptical or it can be irregular. ठीक है. हमारी गैलेक्सी कैसी है? Our galaxy, Milky Way galaxy is spiral galaxy. Our galaxy is a spiral galaxy. ठीक है. Our galaxy is a part of a sector. There is space in the sky. You can divide it into various sectors. अलग-अलग sectors में रख सकते हो. Our galaxy is a part of a sector. Anybody knows that sector? Orion sector सुना है? ORION. देखो, the most, our galaxy is a spiral galaxy and our galaxy is a part of Orion sector. ठीक है, this is the Orion sector. In this Orion sector, our galaxy is a part of this galaxy. ठीक है, इस sector में हमारी galaxy है, Orion sector में हमारी galaxy है, और भी सारे काफी सारे sectors हैं. You have all the various other sectors also, but this is our sector. Then a galaxy which is very near to our galaxy is this galaxy, Andromeda galaxy. So Andromeda is a galaxy which is very near to, which is much more closer to Earth. The galaxy which is much more closer to Earth is Andromeda. Okay, that is a galaxy which is close to us. Now, okay, solar system hai, you have universe, you have stars, you have galaxies. We have our galaxy. Our galaxy is a Milky Way galaxy. It's a spiral galaxy, right? It's a part of Orion sector. Then we have another galaxy which is near to us is the Andromeda sector, an Andromeda galaxy. Okay. All of you know what is a constellation? Constellation is a group of stars. Group of stars is called as constellation.
like you have a very famous constellation Saptarishi. Saptarishi देखा होगा सब लोगों ने. Great Bear, the question mark that you have class 6 NCERT में देखा होगा, if I believe. If you have not seen that, you would have seen in the, इसमें नहीं है, right? Not there. It is like a 7 star. It is like a 7 stars. I'm just getting used to the terms. Galaxy क्या है, sector क्या है, constellation क्या होता है, मैं सिर्फ अभी terms ही introduce करा रही हूँ, ठीक है. So there are, constellation is a group of star. One famous constellation is your Saptarishi, also known as the Great Bear. Okay, it's like a question mark, and if you join the first 2 star and you take a direction, it points out towards the pole star, and pole star points which direction? It points the north direction. ठीक है, अगर pole star दिख गया, suppose you are there in a desert, suppose you are there at a place where you do not know which way you should go, and you should know, if you just know कि west की तरफ जाना है, but मुझे ये नहीं पता कि west क्या है, then what you can do is you can locate this Saptarishi, you can join the first 2 star, you can go a line connecting the star, and you can locate a pole star. Once you locate a pole star, suppose I located the pole star here, then which direction is this? North. Which direction would be this? Which direction would be this? आप लोग ना क्लास 6 में मैप वाला भी चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है. ये नॉर्थ है, ये साउथ है. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. व्हाट डायरेक्शन इज दिस? वेस्ट. व्हाट डायरेक्शन इज दिस? ठीक है. सो सपोज यू लोकेटेड अ पोल स्टार which is to the north, this is to the south, this is which direction? West. This is which direction? ठीक है. ये वाला जो PC वाला डायरेक्शन है वो है वेस्ट, ये वाला जो AC वाला डायरेक्शन है वो है ईस्ट, ठीक है. तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. इतना समझ आया? लिख लो कॉन्स्टेलेशन में, लिख लीजिए कॉन्स्टेलेशन. कॉन्स्टेलेशन रेफर्स टू group of star, a group of a star. Example, Scorpio. Don't like. Scorpio, Cassiopeia, ये भी स्टार ही है, कॉन्स्टेलेशन है. Cassiopeia, Cassiopeia, Cassiopeia. You also have Great Bear या Saptarishi. Great Bear, ये स्पेलिंग Saptarishi. Cassiopeia या Cassiopeia, Great Bear, Scorpio, ये सब कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है. आपको ये समझ आ गया ना? Great Bear helps in what? Great Bear helps in finding the direction, finding the north pole. करो फिर इसको सॉल्व. ये है, ठीक है. See this is your Big Dipper, Great Bear. This one is the 7 stars. The first 2 locate to the pole star. The pole star points to the north direction. Our axis, tilted axis, is aligned to the pole star. Pole star दिख गया तो आपको पता होना चाहिए north है. Now this idea you have. Try to solve this question. I believe it was asked in 2012. A person stood alone in a desert on a dark night. क्यों ही खड़ा था पता नहीं, ठीक है. And wanted to reach his village, which was situated 5 kilometers east to the point where he was standing. Nobody calls the answer. I will take the poll. ठीक है. He had no instrument to find the direction, but he located the pole star, which is the most convenient way to reach his village is to walk. If he wants to go, he's standing at a point. Village उसको इतना पता है कि east में है, 5 किलोमीटर east में है. That is what he knows, and he has located the pole star. What should the person do? Should he walk opposite facing the pole star? If he does that, where is he walking? To the south. If he walks in the direction of the pole star, A, अगर वो walks करे direction of the pole star की तरफ, he is going towards north. If he walks opposite to the pole star, he is going towards south. He has to go where? He has to go
घूम सकता है ऊपर नीचे, कैसे भी घूम सकता है. He wants to go to 5 kilometer east. What should he do? Keep the direction of the pole star to his left or keep the direction of the pole star to his right? How many for C? फिर half half. How many for D? लेफ्ट C में है, लेफ्ट C में. How many for C? How many for D? If this is north, this is south, this is west, this is east. This is, if this is the person, he has to go to the east. ठीक है, तो ये आपका पोल स्टार है. तो what should he do? He'll keep the pole star to his, suppose ये north है, ये north है, board is north, you are south, this is west, this is east. सही, बोर्ड क्या है, नॉर्थ है, आप क्या हो, साउथ हो. ये है वेस्ट, ये है ईस्ट. कहीं ईस्ट में मेरा गांव है, मैं अपने राइट में रखूं पोल स्टार कि अपने लेफ्ट में रखूं पोल स्टार? Where should I keep my pole star? On my left, and I should walk towards east. समझ आया? What is the answer? The answer is C. ठीक है, this is the question that UPSC had asked 10 years ago. ठीक है, तो अब ऐसे नहीं पूछती, आई नो. जिन्होंने एग्जाम दिए वो पहले बोलेंगे ये बात. But then in either case, if you have what we have realized by this paper, 2023 paper, जिसमें एलिमिनेशन को एलिमिनेट करने की कोशिश की है, कोशिश क्या की ही है. ठीक है, what we have realized is प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले हम बोलते थे बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल स्टिल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. Along with that, your NCERTs are important, then also now also. But one more additional factor has been there is that you will have to get more little curious. ठीक है, आपको थोड़ा और curious होना पड़ेगा with the kind of question they are asking, like Indian squirrel, with the kind of questions of marsupial, with the kind of question ki who uses the log of the wood. With these kind of question, it is one thing that it is realized that you need to get more little more curious. थोड़ा और curious होना पड़ेगा. एक तो ये चीज़ है कि कुछ पढ़ रहे हो तो उस पे और थोड़ा क्यूरियस हो जाओ कि हाँ और क्या पता पड़ सकता है, व्हाट मोर कैन बी आस्क्ड, हाउ डू आई लिंक. इट इज नॉट जस्ट ज्योग्राफी एनीमोर कि लिंकेज जरूरी है. इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो हाउ डू यू लिंक. So you'll have to get a little more curious and dig a bit deeper. That's what we have realized with this question, because only one is correct, only two is correct, only three is correct, all of them are correct. You just need to be a little more curious. See, in the class you are with us for 3 hours or 2.5 hours, but you are with yourself for 24 hours. तो आपको थोड़ा अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा और क्यूरियस होना पड़ेगा, और आपको थोड़ा और जितना भी बताया गया है उसमें और थोड़ा सा डिग करना पड़ेगा डीपर, राइट. सो दिस वाज अबाउट 2012. आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द टर्म्स. अभी हम सिर्फ टर्म्स ही करें. यूनिवर्स क्या है, कॉन्स्टेलेशन क्या है, पोल स्टार क्या है, हाउ डज बिग डिपर हेल्प मी इन दिस. ठीक है, वी आर जस्ट गेटिंग यूज्ड टू द टर्म्स. सो राइट अबाउट द नेक्स्ट टर्म. We'll get into the formation of universe, we'll get into the formation of solar system also. Write the term solar system. First point, it is a gravitationally bound system. It is a gravitationally bound system of sun and the objects that orbits it. It is a gravitationally bound system of sun and the objects that orbit the sun. It was formed क्या बना कब था? It was formed 4.6 billion years ago. 4.6 billion years ago from the gravitational collapse of nebula, Nebula. कैसे बना था? There was, it is, what is solar system? It is a
gravitationally bound, it is a gravitationally bound system, ठीक है, of sun and the planets that orbits it. There's sun, there's a planet that is orbiting it, and it is together because of gravity. सब साथ में है क्योंकि gravity ने hold किया है. किससे बना है? It has been formed because of a giant nebula. What is nebula? Nebula is a cloud. Cloud of what? Dust, gases, debris. जितनी भी काफी सारी gases थी, dust थी, debris थी, they were together in a cloud, and this cloud collapsed, condensed, accreted, and then you have your solar system. इसीलिए सब क्या है? एक disc shaped cloud था, पूरा का disc shaped cloud has collapsed, has contracted, has accreted to form the solar system, and therefore still we have this disc shape that is being retained. A majority part of nebula gravitationally collapse हुआ, and that become what? That became your sun. Nearly 97% of the mass of nebula was accreted, and that becomes the sun. So sun बहुत heavy है, and then you have this, you have the rest 3% forming up your solar system. So what we have written, what is solar system? It is a gravitationally bound system that has been formed because of a nebula. लिख लो nebula क्या है? Nebula is a cloud of, nebula is a cloud of dust, gases and rocky substances. You can write one more point. Nearly 97% of the mass of nebula, is in sun. ठीक है, nearly 97% of the mass of nebula is in sun, and rest जो आपका है planet. What all comes under solar system then? क्या क्या आता है solar system में हमारे? We have a solar system. You have, in the solar system we have planets. What planets? My very Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. ठीक है. What are these? These are inner planet, also known as terrestrial planet. What are these? These are outer planet, and they are also known as Jovian planet. Jovian means Jupiter like, and they are also known as gaseous planet. They are Jovian like, and they are what? They are Earth like. They are Jovian planet, they are Jovian Jupiter like, they are Earth like. They are terrestrial planet, they are gaseous planet. They are inner planet, they are outer planet. एक तो ये है solar system में. What else do we have in solar system? You have star, you have sun, we have star, we have sun, we have asteroid, और क्या? We have meteoroids, we have comet, you have dwarf planet. ठीक है, sun लिखा ना? हाँ, stars and sun. ठीक है, this is what you have in your solar system. You have sun, you have planets, you have meteoroid, you have asteroid, you have comet, you have dwarf planet. ठीक है, एक एक करके समझे इन सबको. ठीक है, तो लिख लो सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम इज इक्वल टू दिस. जैसे लिखा है वैसे ही लिखो, ग्रामर एलिमिनेट कर दो, नो ग्रामर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन एन आंसर बिफोर? आंसर लिखा है मेंस के लिए? 2 of you, 3 of you. अब लिखना स्टार्ट किया. व्हाट अबाउट अदर्स? कभी आंसर नहीं लिखा सिवाय यूनिवर्सिटी के एग्जाम के? ठीक है, लिखो, ये तो लिखो. MVEM, JSUN. MVEM is inner planet. It is
terrestrial planet, it is Earth-like planet. JSUN is Jupiter, Jovian planet, basically Jupiter-like. They are outer planet and they are gaseous planet. What do you have? You have this plus you have comet plus asteroid plus meteoroid plus stars plus dwarf planet. उसको भी गिनते हैं यहाँ. हाँ, yes, natural satellites also, that is also part of the solar system, moon and other things. ठीक है, वो सब भी सोलर सिस्टम का पार्ट. हमारा सोलर सिस्टम कहाँ खत्म होता है? Where does the solar system end? अच्छा, इसमें और भी बेल्ट भी हैं. You have Kuiper belt, you have natural satellites, moon and other things, natural satellite. Where does our solar system end? कहाँ खत्म होता है हमारा सोलर सिस्टम? हाँ, ऊट क्लाउड. Who said it? Somebody said that. ऊट क्लाउड. ठीक है, ऊट क्लाउड पे हम बोलते हैं हमारा सोलर सिस्टम फिनिश होता है. ठीक है, so the solar system is supposed to end at Oort cloud. Where is Oort cloud? See, this is your solar system. You have Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. This is your solar system. Can you see asteroid belt between the Mars and Jupiter? Between Mars and Jupiter you have asteroid belt. So you have Mercury, Venus, Earth, Mars. You have asteroid belt between the inner and the outer planet. Asteroid belt है. Then you have Jupiter, you have Saturn, you have Uranus, you have Neptune. Can you see the meteoroids हैं जो burn हो रहे हैं? They seem to be like this. There are comets also. There are comets. Along with this, where you have this one. Beyond Neptune, we said there are 8 planets, right? Beyond Neptune, there is a belt called as Kuiper belt. ये Kuiper belt में कौन मिला था पहले? We found a dwarf planet, जिसको हम पहले planet बोलते थे. Kuiper belt में you have the Pluto. ठीक है, Pluto आपका Kuiper belt में. ये बहुत ही cold belt है, very cold belt, very far away from the sun, a very cold belt. Comets जो होते हैं, that seem to be emerging from the Kuiper belt, very cold place. So you have rocks, you have frozen gases, and you have other debris combined together. That is the formation, that is the composition of comet. Comet में होता क्या है? Rocks plus frozen gases plus the other debris, other and the metallic compound. That is seem to be emerging from the Kuiper planet. That is beyond Neptune, you have a belt called as Kuiper belt. And where does the solar system end? This is considered to be the Oort cloud. Okay, so a hypothetical zone which marks the end of the solar system is called as Oort cloud. So लिख लो ये solar system लिख लो ये Oort cloud लिख सकते हैं that it is, this is the OORT, Oort cloud, OORT, Oort cloud, which marks Oort cloud. It is a hypothetical zone. It is a hypothetical zone which marks the end of the solar system. Which marks the end of the solar. Okay. So let us deal with each one of them one by one. एक एक करके terms को समझते हैं. ठीक है. Firstly, we'll start off with this planets. Firstly, we'll start off with planets. So there is a difference between planet and there is a difference between dwarf planet. Planet अलग है, dwarf planet अलग है. Dwarf planet is a small planet, a smaller planet. What is a planet? There are 3 criteria for a planet. Planet के लिए 3 criteria होते हैं. That it should be a rounded body, it should clear its neighborhood, it should have cleared its path, and it should have a good mass. मतलब it should be bigger body, it should be rounded body, and it should have cleared its path. So आप heading दे planet and dwarf planet. You give the heading. We are dealing with the terms only, planet and dwarf a planet. What is a planet? What is a dwarf planet? This is planet. What is planet? Planet has 3 criteria, right? Planet has 3 criteria. First, it assumes a spherical shape. It assumes a spherical shape. And orbits around the sun.
orbits around the sun. It has a clear neighborhood. It has cleared its neighborhood. Has cleared its neighborhood in its orbit around the sun. In its orbit around the sun. ठीक है, इसको अब हिंदी में समझते हैं है क्या. What is planet? Let's understand in Hindi. A planet is a bigger body that can become rounded. It is a dominant body, ताकि वो अपने बाजू वाला जो है या तो उसको हटा दे या तो उसको अपने अंदर सब्ज्यूम कर ले. So that while it is orbiting around the sun, it is a dominant body and it has power enough to clear the neighborhood around the orbit around the sun. While it is orbiting around the sun, if this is the sun, if this is sun, here the planet is orbiting around the sun. पहला तो orbit करना चाहिए sun पे. Second, बड़ा होना चाहिए, बड़ा body होना चाहिए and rounded shape में होना चाहिए. And because it is big and it's in rounded shape, because it is a big and a dominant body, while it is moving around the sun, there are no much mass debris. It is a dominant body. वही सबसे बड़ा है, बाकी सबको हटा दिया है. What happens in the dwarf planet? A dwarf planet cannot fails to meet the third criteria. Pluto is not a very big. Pluto cannot meet the third criteria. So even Pluto orbits around the sun. Even Pluto का size इतना बड़ा नहीं है, but it is also spherical. But Pluto failed to meet this third criteria, and therefore Pluto was not considered to be a planet. It was considered to be a dwarf planet. ठीक है, तो planet के लिए हमने क्या लिखा? That it should be a massive body. It should be spherical. It should orbit around the sun. It has to clear the neighborhood. ठीक है, तो जहाँ पे लिखा है assumes a spherical shape, वहाँ पे लिख लो. जहाँ पे लिखा है spherical shape, वहाँ पे dash करके लिखो. It is massive enough. It is massive enough. It is massive enough to be spherical. To be spherical under its gravitational force. लिख लो स्टार मार्क करके. Pluto did not meet the criteria of. Pluto did not meet the criteria of clearing the neighborhood. Pluto did not meet the criteria of clearing the neighborhood. Therefore, is a dwarf planet. Therefore, is a dwarf planet. Anybody knows the other names of dwarf planet? और कौन से dwarf planet है? One is Pluto. The other is Ceres. और लिखो 5-6 name of dwarf planet. Some names of dwarf planet are. Ceres. 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 Comma Pluto. Comma make. M-A-K-E. Make. मुझे कुछ हुआ नहीं है. बोले क्या? Make. Then Eris. E-R-I-S. Fourth one is Eris. E-R-I-S. Eris. And then you have Huame. H-A-U-M-E-A. Huame. 5 dwarf planets के बारे में हमें पता है. Pluto, Ceres, Make, Huame and Eris. ठीक है, these are the. बंद करना है, फैन ऊपर करना है. बाहर एसी को रिमोट बाहर ले जाता है. हाउ डू वी कॉल? ठीक है, प्लैनेट्स देख रहे हैं.
प्लैनेट्स के साथ और भी टर्म्स देखना है, प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट का डिफरेंस देखा है। So we were looking at some terms. We started off with planets. We understood dwarf planet and planet. We understood the names of dwarf planet. ठीक है, आपने कूपियर बेल्ट और ऊट क्लाउड देख ही लिया है, उसके बारे में लिख लो। कूपियर बेल्ट, कूपियर बेल्ट, ठीक है, कूपियर बेल्ट के लिए लिख ले, इट इज द जोन ऑफ न्यूमरस रॉक्स, इट इज अ जोन ऑफ न्यूमरस रॉक्स beyond Neptune, beyond Neptune. It is the zone of numerous rocks beyond Neptune. ठीक है, Pluto is considered to be, Pluto is considered to be a part of this zone. Pluto is considered to be a part of this zone. हाँ, ये भी सर बुला लो, फोन करेंगे। ये भी करनी है, ठीक है। सो व्हाट इज कूपियर बेल्ट? इट इज अ जोन ऑफ न्यूमरस रॉक्स, ठीक है, दैट इज कूपियर बेल्ट। व्हाट इज ऊट क्लाउड? ऊट क्लाउड लिख लो, ऊट क्लाउड, ऊट क्लाउड लिख लिया। इट इज मच लार्जर बेल्ट देन अ कूपियर बेल्ट, मच लार्जर बेल्ट देन द कूपियर बेल्ट, वही लिख लो जहां लिखा था, मच लार्जर देन कूपियर बेल्ट। it has gases, it has gases, dust, it has gases, dust and ice, it has gases, dust and ice, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत आइडिया हुआ सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं, you have the rocks, you have debris, you have gases, you have Kuiper belt, you have Oort cloud, and there are dwarf planets which are not planet, but because they are not massive enough to clear their neighborhood. One example is Pluto, ठीक है। Now if I say these are inner planet and these are outer planet, the inner planet are very different from the outer planet. Inner planet like Mercury, Venus, Earth and Mars is very different from Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Why? मतलब कैसे डिफरेंट है? पहले तो ये टेरेस्ट्रियल है, यानी रॉकी हैं, दे आर रॉकी बट दे आर गैशियस, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। क्यों? व्हाट हैज बीन द रीजन दैट व्हाई इज सब सेम नेब्यूला से बने? एक तो पहले क्लाउड और डस्ट डेब्रिस ही था, सभी सेम भाई बहन जैसे, तो अलग क्यों है? व्हाई आर दे डिफरेंट? व्हाई इज MVEM डिफरेंट फ्रॉम JSUN? The position in the solar system. What did the position in the solar system do? टेम्परेचर से क्या हुआ? कुछ सन के पास है, कुछ सन से दूर है, उससे क्या हुआ? अलग कैसे हो गए? अब जब तक वो लिंक नहीं बताओगे अलग कैसे हो गए, तब तक ये फैक्टर ही है, विल हैव टू डेवलप द लिंक। वो ऑल करेक्ट कि सन के पास है, टेम्परेचर ज्यादा था, उससे हुआ क्या? लाइफ तो सिर्फ अर्थ पे है, एनवायरमेंट क्या? हाँ, जो लाइट गैसेस थी वो उड़ गई। सम विच आर नियर टू द सन, MVEM, versus this is the asteroid belt, this is JSUN. These are terrestrial, these are rocky, these are gaseous. And what is the gas they have? The gas they have is hydrogen and helium. They have lot of hydrogen and helium, but they do not have, what is the hydrogen and helium in the atmosphere of Earth? Not even 0.1%. 0.1% भी नहीं है, 78% नाइट्रोजन है,
21% ऑक्सीजन है, 99 तो यही हो गया, 0.93% आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 0.04% भी नहीं है हाइड्रोजन और हीलियम. बट यू लुक एट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, दे हैव 90% एज हाइड्रोजन एंड हीलियम. काफी ज्यादा हाइड्रोजन एंड हीलियम है. So what happened is, as they were near the sun, the solar winds, matlab the charged particle from the sun, they blew off these light gases. So the gases were blown away. तो इन्होंने क्यों नहीं पकड़ के रखा गैसेस को? उनकी भी तो ग्रेविटी है. Why could they not hold the gases? The sun is trying to blow off the gases, but then they can also hold the gases. Why are they not able to hold the gases? Because if you look at the size of MVEM, they are very small planets. But Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, they are very big planets. So the gravity is also not very powerful to hold the gases. Okay. So the gases were blown off by sun. Second, the gravity was very small. They could not hold the gases. Third, the gases actually remained in the gaseous form. Unlike here, in Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, certain gases they have solidified. They have converted into ice. They have converted into solid material. But here the gases have remained in the gaseous form. Okay. So three reasons. One, they are near to the sun. Therefore the temperature is high. Therefore the gases remains in the gaseous form. They are not solidifying or condensing. Second, they are smaller. The gravity is not very powerful to hold the gases. Third, that the solar winds tries to blow off these gases. So what happens? The gases gets blown off, and what remains is the terrestrial planet, the Earth-like planet, the rocky planet. Okay. So write this. The difference between the inner planet and the outer planet. The difference between the inner planet and the outer planet. First, the inner planet are rocky in nature. The inner planet are rocky in nature. Because first, it is in the close vicinity of the sun. It is in the close vicinity of the sun. एक साथ ही लिखाऊंगी, अलग से डिफरेंस नहीं लिखा रही हूँ, पैराग्राफ में रखो. आपको डिफरेंस रखना है तब भी चलेगा, बट देन यू विल हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल. ठीक है, यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट एंड देन राइट. ठीक है, तो मैं एक साथ पैराग्राफ में बता रही हूँ. द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर रॉकी इन नेचर बिकॉज वन, दे आर इन द विसिनिटी ऑफ द सन and therefore it is too warm for gases to condense. It is too warm for gases to condense to solid particles. ठीक है. Second, solar winds are more intense. Solar winds are more intense near the sun. Therefore, it has blown off light gases like hydrogen and helium. Third, terrestrial planet are smaller. And therefore their lower gravity could not hold the escaping gases. ठीक है.
ये टॉपिक हम उसमें भी पढ़ेंगे जब हम एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे. While you read your class 11th NCERT, in 11th NCERT there is one paragraph given, the evolution of Earth's atmosphere. If you look at the Earth's atmosphere, अगर हम अर्थ का एक थोड़ी सी लिंक बना रहे हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% argon, 0.03% carbon dioxide, and then you have trace gases of hydrogen and helium. But this is very different from Jovian planet. उनमें majority of the atmosphere is hydrogen and helium. तो ये तो समझ आ गया कि क्यों हुआ. बट आप ये सोचें, जस्ट थिंक ऑफ दिस, व्हाई इज नाइट्रोजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, व्हाई इज ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, आई बिलीव, एंड व्हाई इज कार्बन डाइऑक्साइड सो लेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. यू लुक एट द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, यू लुक एट द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, there's lot of carbon dioxide. Venus is one of the hottest. Why? Because carbon dioxide is there, and carbon dioxide acts as a greenhouse gas. We are concerned about carbon dioxide, right? Climate change, global warming, carbon dioxide बढ़ा रहे हो. तो अर्थ, वीनस में इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, मार्स में इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, बट अर्थ में तो 0.03 है. क्यों? वेजिटेशन, अरे नहीं, इतना भी नहीं, वेजिटेशन इतना नहीं ले पाएगी. रादर अभी भी जो हो रहा है, इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट डे ऑल्सो, carbon dioxide, the majority of the carbon dioxide is being absorbed by whom? Yes, oceans. 93% of carbon dioxide is being absorbed by the oceans as per IPCC. तो लिंक ही बता रहे हैं, majority of the carbon dioxide got dissolved into the oceans. And why oceans? Because Earth had particular climate, particular temperature, that the water could exist in ice, water could exist in the liquid form, water could exist in the solid form also. हमारे में तीनों ही है, आइस भी है, गैस भी है और लिक्विड भी है. तो अर्थ का क्या हुआ, अर्थ का जो कार्बन डाइऑक्साइड था अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो डिसॉल्व होके किसके अंदर चला गया है, ओशंस में. इसलिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. ठीक है, वेजिटेशन है, बट उससे ज्यादा बड़ा रीजन है कि डिसोल्यूशन है, dissolved in the precipitation and became a part of the ocean. Why does the earth has nitrogen? Why does the earth's atmosphere has nitrogen? Yes, it has to do with the formation of atmosphere. बताओ. The gases were released when the earth was, see, everything is nebula, okay, everything is gases, dust, debris, all of them are coming, cooling and contracting to become the planet, to become the dwarf planet, to become the sun. Everything is coming and collapsing and coming together to become the planet. So even earth was going through that, phase only, that everything is coming together, collapsing and becoming either a planet, either a dwarf planet, either a sun. यही तो था पहले. क्या था, डस्ट डेब्रिस और गैस ही थे, सब आ रहे हैं एक साथ इकट्ठे होके और आपके प्लैनेट बन रहे हैं, ड्वार्फ प्लैनेट या फिर स्टार या सन, जो भी बन रहा है. जब अर्थ भी ऐसे बन रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ गैसेस दैट इज कमिंग आउट. देयर वर लॉट ऑफ गैसेस दैट वर कमिंग आउट. व्हाट गैसेस वर कमिंग आउट? अमोनिया केम, कार्बन डाइऑक्साइड केम, आर्गन केम, हाइड्रोजन केम, ऑक्सीजन नहीं था, हीलियम केम. कार्बन डाइऑक्साइड dissolved and became a part of the ocean. Ammonia got split into nitrogen and hydrogen. हाइड्रोजन का हो गया, वापस से उड़ गया, बिकॉज हाइड्रोजन इज लाइट. बिल्डअप किसका हो गया? नाइट्रोजन का. Why could nitrogen build up? Because nitrogen is non-reactive gas. It does not react as much. Chemistry का यूज कर रहे हैं. Nitrogen does not react as much. इसलिए our Earth's atmosphere has 78% of nitrogen, and we have less of carbon dioxide, and we have some amount of argon. Argon is also there, but very minute. And once the ocean forms, once the carbon dioxide is in the ocean, what happens? Life comes, and then what do you have? You have oxygen in the oceans, and you have oxygen in the atmosphere also. So that is why हमारा जो composition of atmosphere है is very very unique. We will deal with this in detail while we are dealing with atmosphere. जब हम climate पढ़ेंगे तब उसमें atmosphere पढ़ेंगे, but उसके पहले, before that, I am just developing a linkage between the nebula, between the atmosphere. ठीक है, तो कुछ terms देख रहे थे. We were looking at some terms. We were looking at planets,
we were looking at inner planets, we were looking at why is the nature different, right? The second term, asteroid. एस्टेरॉइड टर्म्स ही इंट्रोड्यूस कर रही हूं मैं आज, ठीक है, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द टर्म्स. व्हाट इज एस्टेरॉइड? व्हाट इज एस्टेरॉइड? देखो आपके सोलर सिस्टम में क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में कुल मिला के 4 चीजें, यू हैव गैस, यू हैव रॉक्स, यू हैव डस्ट, ठीक है, डस्ट, रॉक्स, you have gas, you have metallic compounds and you have icy shaped gases. मतलब जो gases froze हो गई है उसको आप icy gases बोल रहे हो. तो आपके पूरे सोलर सिस्टम में 5 ही चीजें, rocks, metals, dust, gases in the gases form and the solidified gases. Now what is, और ये सब कुछ उसी से बना है, आपका अर्थ भी उससे बना है, आपका सन भी उससे बना है, आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स भी उससे बने हुए हैं. What is asteroid? Asteroids are nothing but rocks, debris, metallic compounds, but they are found in a particular belt. They are found between whom? They are found between Mars and Jupiter. एक umbrella term होता है called as meteoroid. ठीक है, अब एक सेकंड के लिए meteoroid समझो. Meteoroid क्या है? Rocks, dust, debris and the metallic compounds can be found anywhere on the solar system. That meteoroid, listen carefully, that meteoroid that is found in the belt between Mars and Jupiter is called as asteroid. Umbrella term क्या है? Meteoroid. But वो meteoroid जो Mars और Jupiter के बीच में मिल रहा है उसको क्या बोलते हो? Asteroid. ठीक है, तो यही terms लिखवा रहे, right? Asteroid. और outer planet से नहीं, what do you want to write? मतलब ये कि gases क्यों है? You want, I can give you information on each of the planets. एक काम करो, लिख लो फिर, ठीक है. Write some of the specific details of each of the planets, 1 1 2 2 line, it will help you only. ठीक है, लिख लो. मर्क्यूरी के बारे में लिखो, मर्क्यूरी क्या है, वीनस क्या है, what is earth and other things. Write about Mercury, just 2 lines on each one of them. Mercury, first, it is the smallest planet. It is smallest planet. It is not the hottest planet. It is not the hottest planet. सबसे पास है तो लगेगा कि सबसे गर्म होगा, but that is not the case. It is not the hottest planet. Which is the hottest? Venus is the hottest. Right in bracket, Venus is the hottest. Right? Mercury has no moons. It has no moon. Next point, it has thin atmosphere. It has thin atmosphere, mostly of sodium, potassium. Okay, this is about your Mercury. It has actually no atmosphere. बहुत ज़्यादा atmosphere है भी नहीं. बहुत ही पास है सन के. Solar wind has actually blown off the atmosphere, but it is not the hottest. Why? Because it has no atmosphere. What warms the earth is the atmosphere. What warms the Venus is the atmosphere. ठीक है, if there would have been no atmosphere, there would have been no life on the earth that would have been possible. ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस जब समझेंगे तब इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे. What happens is the atmosphere, the blanket of the gases, what do? They allow the incoming solar radiation. Solar radiation comes, it heats the surface and then there is re-radiation and that is trapped by the atmosphere. जो अर्थ रेडिएट करता है हीट को, ये एटमॉस्फेयर उसको ट्रैप करता है, इसीलिए एटमॉस्फेयर इज वार्म. दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बट they are opaque to the outgoing terrestrial radiation. So that is how the atmosphere and the earth, your atmosphere is heated. Atmosphere is not directly heated by the sun's radiation. ठीक है, it is the earth's surface that gets heated. The earth's surface radiates the heat and the atmosphere traps the heat. यही होता है ग्रीन हाउस गैस. This is what is ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. इसको एटमॉस्फेयर में अच्छे से पढ़ेंगे, बट इतना समझ लो अभी के लिए दैट वी हैव वार्म, वी हैव लाइफ ऑन द अर्थ क्योंकि एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर ने क्या किया? एटमॉस्फेयर ने अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह प्रोटेक्ट किया, एक ब्लैंकेट की तरह गर्म रखा. ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता
तो अर्थ ऐसा गर्म नहीं हो पाता, अर्थ गर्म नहीं हो पाता उतना, तो अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। वी कुड हैव बीन वेरी वेरी कोल्ड और इट कुड हैव बीन फ्रीजिंगली हॉट, ठीक है। तो Mercury is not the warmest, it is the Venus that is the warmest. How does atmosphere play an important role? Wait for that, right? The second one, Venus. Venus के बारे में लिख लो. Venus is known as Venus. It is known as Earth's twin. क्यों? Earth का twin. क्यों? It is the same size. It is the same size and same density, nearly same size and density of the Earth. It is the same size and the same density that of the Earth. It is also our closest neighbor. सबसे हमारा closest neighbor. Second point है Venus is the closest neighbor. ठीक है. Venus को twin तो कहते हैं, but Venus को toxic twin कहते हैं. Venus is known as toxic twin. क्यों toxic twin कहते हैं? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, इट इज वेरी टॉक्सिक, तो इसलिए उसको टॉक्सिक ट्विन भी कहते हैं. इट इज नोन एज ट्विन, इट इज नोन एज टॉक्सिक ट्विन बिकॉज उस वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं. ठीक है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट इज अ ट्विन बट अ टॉक्सिक ट्विन. इट इज अ ट्विन बट इट इज अ टॉक्सिक ट्विन because it has sulfuric acid clouds. It has sulfuric acid clouds. ठीक है, so it is what was this? This was Mercury, Venus. Then we have Earth. Earth के लिए छोड़ दो Mars. अच्छा, Earth के लिए लिख लो. Earth is the densest planet of the solar system. सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? Earth के. Earth is the densest planet of the solar system. Write about Mars. MVEM, Mars. गर्मी लग रही है अब, है ना? They'll go mad. फिर कॉल करें? अच्छा, ठीक है, फाइन. ये रोज होता है. हाँ, I could figure out from his expression. Mars. Write about Mars. It is similar to Earth. It is similar to Earth with respect to rotation. ठीक है, tilt of rotation. The tilt with respect to rotation, tilt of the axis, tilt of the axis. ठीक है, what is the tilted axis of Earth? 23.5. What is the tilted axis of Mars? 25 degree. काफी सेम ही है, बहुत सेम है, इसीलिए it is similar to Earth with respect to tilt, with respect to rotation and with respect to the seasons also. ठीक है, लिख लो. अच्छा, मार्स के एटमॉस्फेयर भी 95% कार्बन डाइऑक्साइड है. स्टिल मार्स का टेम्परेचर बहुत कम है. मार्स इज वेरी वेरी कोल्ड. इफ देयर इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इट शुड बी वार्म, बिकॉज हमारे यहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो अगर मार्स में भी 95% कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो ठंडा क्यों है? नो, नॉट डिस्टेंस. Not present, but the atmosphere has 95% of CO2, but the thickness of atmosphere is very very thin. इतना सा पतला सा अगर एटमॉस्फेयर है तो उसमें कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो वो मैटर ही नहीं करता है. सो इट इज हैज अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर. And if this is your Mars, only one layer of atmosphere is present. Very thin layer of the gases is present. So that does not play a very important role in warming. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो Mars has 95% of CO2. And Mars has 95% of CO2, but still is very cold. Still is very cold because the atmosphere is extremely thin. Because the atmosphere is extremely thin, you can write 1% of Earth's atmosphere. जितना Earth का atmosphere उसका बस 1%.
1% of the Earth's atmosphere, comma, and it is very dry. It is very dry. Atmosphere में ज़्यादा water vapor नहीं है. It is very dry. ठीक है, no water vapor. And yes, one of the reason could also be distance from the sun, but more than the distance from sun. One reason can be that also, but more than that, it is the size, the thinness of the atmosphere. तो लिखना तो लिख भी लो, and far away from the sun, and far away from the sun. ठीक है. So this was what? MVEM. Moving on to J, Jupiter. Write about Jupiter. First, largest planet. जुपिटर को फेल्ड स्टार बोलते हैं. जुपिटर इज नोन एज फेल्ड स्टार. इसका मतलब इट कुड हैव बिकम अ स्टार, बट इट इज अ फेलियर, एंड इट कुड नॉट बिकम अ स्टार. ठीक है, थोड़ा भी ज्यादा साइज होता, मतलब मैं आपको अप्रिशिएट करा रही हूँ कि कितना बड़ा है, लार्ज, कितना लार्ज है. और ऐसे भी बोलते हैं कि साबू जुपिटर से आया था. चाचा चौधरी, इफ यू हैव सीन, साबू हैड एक्चुअली कम फ्रॉम जुपिटर. तो इतना बड़ा था, इतना बड़ा प्लैनेट भी था. ठीक है, जो 90s के किड्स हैं उनको ज़्यादा समझेगा. ठीक है, तो जुपिटर इज अ वेरी बिग प्लैनेट, द लार्जेस्ट प्लैनेट, राइट, एंड इट इज कॉल्ड एज फेल्ड स्टार. मतलब इतना साइज है, थोड़ा सा बड़ा साइज होता तो हमारे सोलर सिस्टम में 2 स्टार होते. देयर कुड हैव बीन 2 स्टार इन दी सोलर सिस्टम. ठीक है, so what we've written is Jupiter is basically largest planet in our solar system. In bracket you can write it is twice as massive. It is twice as massive as all the planets combined. As all the other planets combined. सारे बाकी सारे planets को मिला भी लोगे तब भी उससे 2 गुना है. That is your Jupiter, right? Jupiter has a giant storm. Jupiter has a giant storm. STORM, storm. मतलब घूम रहा है. Something is circulating there. That is called as great red spot. Called as great red spot. Great red spot. नासा का एक ऑर्बिटर है जूनो हैज एक्चुअली जूनो वांटेड टू विटनेस दिस. जूनो गया है ये देखने के लिए, मतलब 5 मिशन है, जाते जाते ही देखेंगे, बट उनको ग्रेट रेड स्पॉट को पढ़ना था. दे वांटेड टू स्टडी अबाउट इट. तो नासा's जूनो मिशन, नासा's जूनो ऑर्बिटर, नासा's JUNO, नासा's जूनो ऑर्बिटर is exploring this red spot. Is exploring this red. रिकॉर्ड लिख लो. yes, sun, it must have its own light. ये खुद का ही लाइट होना चाहिए. it should be massive enough. मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप बोल रहे हो कि जुपिटर स्टार होता तो कैसे बना, क्या मास है. देयर इज नो पर्टिकुलर मास दैट कैन क्वालिफाई इट फॉर इट टू बी सन. कोई एक पर्टिकुलर मास नहीं बताया कि इतना मास होगा तभी ही सन बोलोगे. इट शुड बी मैसिव बॉडी, इट शुड बी ल्यूमिनस बॉडी, इट शुड हैव अ लाइट एंड एनर्जी ऑफ इट. दैट इज द सन. सिंपल टेक्निक, सिंपल डेफिनेशन. ठीक है, कोई पर्टिकुलर मास नहीं बताएंगे. एक्चुअली दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज जनरली आस्क्ड टू मी. दैट इज यू सेड दैट नियरली 97% ऑफ द मास इज इन दी सन. नेब्यूला का 97 मास सन में चला गया. अब बचता है 3%. उस 3% में you have planets, you have asteroids, you have meteoroids, you have comets, you have other rocky substances, and of the solar system you say Jupiter is as massive. So what is the mass of the sun? मतलब when you will call something as a star, that is not defined per se, but something that becomes massive, it collapse के कारण has a light and energy of its own, that is called as sun. So particular mass नहीं बताया कि 100 किलोमीटर, 100 kg, 200 kg, 400 kg, वो नहीं बताया. ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड कि आर यू ट्राइंग टू से दैट थोड़ा भी बड़ा जुपिटर होता तो वो सन बन जाता. तो हमारे यहाँ पे 2 सन होते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि 97% मास चाहिए होता तभी ही आपका सन बनता. दैट इज नॉट द केस.
कहाँ थे हम? NASA's Juno orbiter is currently exploring this one. You can write the next one. The atmosphere, Jupiter's atmosphere is mostly hydrogen and helium. Saturn, the next one, Saturn. It is the second largest planet. It is the second largest planet in our solar system. I don't know how many of you have seen this image. एक image है, शायद NCERT में अभी है कि पहले थी, कि एक water दिखाया हुआ है, water body, और उस पे Saturn तैरता हुआ दिखाया हुआ है. It is seen that Saturn is swimming on the water, and the image was trying to tell that the density of the Saturn is less than that of the water. It is so light, इतना light planet है कि उसका density water से भी कम है. Density of the water is 1. Density of Saturn is 0.6. ठीक है, so it is the second largest planet. The second is the density of Saturn. The average density of Saturn is 0.6 grams per cubic centimeter. You want to write the entire unit, grams per cubic centimeter, which is less than that of the water, which is less than that of water. ठीक है, Uranus. Uranus rotation, axis of rotation is very different from that of the other planets. कैसे sun rotate करता है? How does the sun rotate? From west to east. Venus rotates from east to west. Venus उल्टा rotate करता है. All the other planets they rotate from west to east except Venus. Venus rotates from east to west. लिख लेना अपने notes में बाद में. And Uranus कैसे rotate करता है? Uranus ऐसे tumble करता है. It actually tumbles. We've seen that video. Yes. So Uranus actually tumbles. So you can write about Uranus. It is unique in its rotation. Unique in its rotation. As it tumbles, okay, as it tumbles on its side. You can also write one thing. Uranus is an ice giant. पूरा icy है. Uranus is ice giant. And the atmosphere is mostly hydrogen and helium. The atmosphere is mostly hydrogen and helium. एक और लाइन लिख लें, मतलब नेपट्यून के बारे में. राइट अबाउट नेपट्यून. It is the only planet, पहले तो it is the only planet in our solar system. It is the only planet in our solar system that is not visible. That is not visible to the naked eye. Naked. काफी दूर है ये और हमको दिखता नहीं. ठीक है. So sun rotates from, Earth rotates from west to east. All the planets rotate from west to east except Venus. Venus rotates from east to west. And what does Uranus do? What does Uranus do? It tumbles. Okay. बहुत पढ़ाई हो गई, थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं. So there is no sound. There is no sound here. Actually, it was trying to show a ball dance there.
ठीक है, but ball dance of the planets, and it says that every one of them is actually moving around the sun, but except one who is doing a side show. The side show is being done by Uranus, and Uranus is actually tumbling, just like on the side it is rotating. तो ऐसा क्यों हुआ? The tilt is actually, the Earth's tilt is 23.5. The tilt of Uranus is nearly 98 degree, and therefore बोलते हैं it is tumbling on its side. Why does this happen? This happened because there was a body, a big body as similar to that, as size हमारा moon के जितना. It actually touched Uranus, it hurt Uranus, and then Uranus का tilt change हो गया, and now it is doing what? It is actually tumbling. वैसे tumble करता है, वो rotate अपने side पे करता है. हाँ, एक body, एक rock, एक debris, एक meteoroid, ठीक है, उसने hurt कर दिया, size moon के जितना था, ठीक है. So this is what is there. थोड़ा music होता तो अच्छा लगता, but then ठीक, fine. Moving on. So you have this one. We'll do rotation and revolution later on. What are we looking? We are looking at terms. हमने planets देख लिया, हमने dwarf planets देख लिया. Write about meteoroid. Write about meteoroid. Meteoroids are lumps of rocks. Meteoroids are lumps of rocks and metals. Lumps of rocks and metals that orbits the sun. That orbits the sun. Second, they are found throughout the solar system. They are found throughout the solar system. ठीक है, ब्रैकेट में from rocky inner planet to Kuiper belt, Kuiper, to Kuiper belt. Right. क्या बोला meteoroid के लिए? These are lumps of rocks and metallic objects that are orbit around the sun. Rocks है, metals है जो sun के around orbit कर रहे हैं. ये पूरे solar system में मिल सकते हैं, from the inner rocky planet to the Kuiper belt. That is your meteoroid. ठीक है. Now when this is your meteoroid, okay, it's not given. Here you have the meteoroid. This one, okay, a metallic fragment, a rocky fragment that can become an asteroid, that could have been a part of comet. That is जो भी rocky substance हमारे पूरे planet, पूरे solar system में orbit कर सकता है. ठीक है. If it is found within a particular belt called as asteroid. If it had some gas, then it becomes a part of the comet. ठीक है. तो comet में क्या होता है? Comet basically, what is the difference between meteoroid and comet and asteroid? A meteoroid is a lump of rock and metal. In this rock of lump and metal, if you have solidified gases, ठीक है, the composition becomes different. Rocks plus metals plus solidified gases. This is the composition of comet. A comet has a solidified gas. Now what does a comet do? A comet is basically a rocky substance that has some metal, it has some rocks, and it also has some solidified gas. Now what is it orbiting? It is orbiting the sun. Sun को orbit किया. As it is trying to orbit the sun, when it comes near the sun, what will happen to the gases? The gases will start warming up. As the gases start warming up, they will start evaporating. As they start evaporating, what will a comet have? A comet will have a tail. तो comet क्या होता है? Comet वो होता है जिसके पास एक tail होती है, और ये tail किससे directed होती है? हमेशा directed होती है away from the sun. This is the sun. As it is heating the gases, there is a evaporation of the gases that is forming the tail. तो composition क्या था? meteoroid के जैसे metal भी था, rocks भी था, plus solidified gases भी थे. ठीक है. आप solid भी बोल रहे हो, gases भी बोल रहे हो. There can be solidified gases when it is very very cold. The gases can assume a solid shape. ठीक है.
So when it is very very cold, कुइपर बेल्ट के पास काफी ठंडा होता है, तो फिर आपकी ये गैसेस होती है. एंड दिस इज योर कॉमेट. सो कॉमेट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स टेल. क्यों कॉमेट में टेल होती है? क्योंकि सॉलिडिफाइड गैस होती है. सॉलिडिफाइड गैसेस टेल कैसे बनाती है? व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग द सन, इट हीट्स अप, इट इवेपोरेट्स एंड फॉर्म्स द टेल. ठीक है. वी आर डूइंग 2-3 टर्म्स टुगेदर, meteoroid, comet and asteroid. Asteroid is also meteoroid but it is found in a specific belt. ठीक है. तो हमने meteoroid लिखा. Write about comet. Comet, they are composed of frozen gases together with the pieces of rock, dust and the metallic fragments. गैस भी है, मेटालिक फ्रेगमेंट्स भी है और डस्ट भी है, रॉक्स भी हैं. ठीक है. यू कैन ऑल्सो राइट व्हेन अ गैस इज कूल्ड टू सच अ डिग्री, व्हेन अ गैस इज कूल्ड टू अ लार्जर डिग्री, it becomes solidified. In bracket you can write frozen gas. Right. Next one. As a comet orbits closer to sun, as the comet orbits closer to sun, the gases heat up, comma, starts evaporating and forms a tail. ठीक है. You can write comets generally originate from Kuiper belt and Oort cloud. ठीक है. Understood the difference between meteoroid, asteroid and this one. Asteroid लिख लिया क्या? नहीं लिखा. Asteroid लिख लो. Asteroid please write. They are the lumps of rocky substances and metallic fragments that orbit the sun, and is found in path between Mars and Jupiter. Path between Mars and Jupiter. Basically, asteroid belt Jupiter के पास ही क्यों मिलता है? There are rocks and debris. The rocks and debris, planet क्यों नहीं बन गया? जब इतने सारे rocks और debris हैं, तो अब planet ही बन जाना चाहिए था. Why could they not become a planet? There's lot of rocks and debris. If they would have come together, they could have become a planet. Why did they not become a planet? बताओ कैसे यहाँ पे एक रॉक ऑफ डेब्रिस इतनी ज्यादा मिल रही है और कहीं तो इतनी ज्यादा नहीं मिल रही, यहाँ पे क्यों मिल रही है? Why am I getting so much of debris here between Mars and Jupiter? Because firstly इतना मास नहीं था कि प्लैनेट बने, तो डॉर्फ प्लैनेट बन जाता. डॉर्फ प्लैनेट क्यों नहीं बना? Because Jupiter बहुत बड़ा है. Jupiter is massive, right? As Jupiter is massive, Jupiter's gravity was massive and it was interfering with the formation of a planet or a dwarf planet.
So there is no planet that is formed. They have not acquired a rounded shape and they have been dispersed throughout the world. तो जुपिटर बहुत मैसिव है, जुपिटर की ग्रेविटी ने रोक दिया, ठीक है। पापा के सामने वो हरकत नहीं कर पाते जो अकेले में कर लेते, तो जुपिटर पापा थे, उसको रोक दिया और पूरा मास इसे डिस्पर्स हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है। तो कभी कंफ्यूजन हो किसके बीच में है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में, ठीक है। लिखो, द मेन एस्ट्रॉइड्स आर एस्ट्रॉइड्स कौन से हैं? मेन एस्ट्रॉइड्स आर सिरिस, CERES, सिरिस और भी कहीं पहले पढ़ा, ड्वार्फ प्लैनेट, तो ड्वार्फ प्लैनेट भी है और एस्ट्रॉइड भी, सिरिस, वेस्टा, VESTA, वेस्टा, कॉमा पलास, PALLAS। ये 50%, ये लिख सकते हो, 50% ऑफ द एस्ट्रॉइड, 50% ऑफ द मास ऑफ एस्ट्रॉइड बेल्ट, 50% of the mass of asteroid belt is found in these three asteroids, ये तीन एस्ट्रॉइड्स में इनका 50% ऑफ मास ऑफ एंटायर एस्ट्रॉइड बेल्ट है। नेक्स्ट लिखो, द नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल मास ऑफ एस्ट्रॉइड बेल्ट, द टोटल मास ऑफ एस्ट्रॉइड बेल्ट is too small to form a single planet. And the gravity of Jupiter prevented this mass to form a single body, एक बॉडी क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि जुपिटर ने इंटरफेयर किया, ठीक है। तो दे कुड नॉट बिकम अ सिंगल बॉडी एंड द मास वाज नॉट हाई इनफ टू बिकम अ प्लैनेट। तो कुछ एक ड्वार्फ प्लैनेट वहां पे है, दैट इज योर सिरिस है। तीन एस्ट्रॉइड आपका 50% ऑफ द मास ऑफ द एंटायर एस्ट्रॉइड बेल्ट लाते, ठीक है। नाउ दिस इज योर what terms we have done. We have done few terms like asteroid, comet, meteoroid. comet कर दिया, asteroid कर दिया और meteoroid कर दिया। this and this is done, ठीक है। 1, 2 and 3 is done. Now you should know two more terms, meteorite and meteor. किस को पता है? How many of you know meteor and meteorite? Okay, not many of you. See, what is meteoroid? An umbrella term. Rocks and debris and metal compound coming together. ये rocks debris compound करते क्या है? Orbit करते हैं sun को. As it tries to orbit the sun, it is quite possible that ये earth पे आके गिर सकते हैं. They can fall on the earth also. So any meteoroid that is moving in the solar system can come on the earth. As it is coming on the earth, अर्थ को कौन बचाएगा? अर्थ का एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ गैस, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ। So now a meteoroid, METEROID, that is trying to come on the earth's surface. As it is trying to come at the high speed, it comes in contact with the earth's atmosphere. The atmosphere tries to burn it up. If it gets completely burnt up, it is called as meteor. If it is not able to completely burn up and some portion is left and has arrived on the earth's surface, it is called as meteorite. तो एक टर्म है meteoroid, एक टर्म है meteor और एक टर्म है meteorite, ठीक है। लिखो meteor and meteorite, write about meteor and meteorite। हाँ, साथ में लिखो, अलग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। when meteoroid enter the earth's atmosphere,
when meteoroid enter the Earth's atmosphere at high speed and burns up completely, it is called as it is called as meteor, METEOR. ठीक है, full stop. When a meteoroid or when a meteor has not completely burnt in the atmosphere and hits the ground it is called as आ गया लैंड पे, आ गया सरफेस पे, आ गया, इट इज कॉल्ड एज meteorite, also called as meteorite. Fine. When it hits the earth's surface, what will happen? It will create a depression. It can create small depressions. Does anybody know a lake? Lunar Lake. No, crater is volcano. Lunar Lake in Buldhana region of Maharashtra. Lunar Lake of Maharashtra. Lunar, LONAR, Lunar Lake in Maharashtra is a meteorite created lake. Is a meteorite created lake in India. ठीक है, टर्म्स समझ आ रही है? सोलर सिस्टम, what is solar system, what is universe, what is Kuiper belt, what is Oort cloud, what is inner planet, outer planet, how is inner planet different from the outer planet, what is meteoroid, what is comet, what is a meteor, what is a meteorite, and what is your other pole star, constellation, great bear. सिर्फ terms ही use to कर रहे हैं. This was the question that was asked in 2011. Before 2011, 2010 तक optional was also a part of your prelims examination. मतलब prelims में अभी जैसे CSAT है तब optional था. ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, तब सिर्फ optional और GS था. तो तब 2010 के पहले वाले जो क्वेश्चंस देखेंगे थोड़े टेक्निकल देखोगे हर सब्जेक्ट के. मतलब इवन इफ यू लुक एट ज्योग्राफी तो थोड़े ज्यादा टेक्निकल लगेंगे. फैक्चुअल है बट टेक्निकल है, लाइक जियो सिंक्लाइन, लाइक अदर थिंग्स, क्योंकि वो ऑप्शनल स्पेसिफिक है. वो रीजन भी दे देता है और बोल देता है बताओ क्या रीजन है. तो वो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, बट देन ट्रेंड समझने के लिए इट इज 2011 एंड लेटर ऑन. और उससे भी ज्यादा अब जो ट्रेंड समझना है इट इज 2019 एंड लेटर ऑन. यूपीएससी हैज शिफ्ट द गियर्स फ्रॉम 2019 एंड लेटर ऑन. ठीक है, मेरे अटेम्प्ट्स हो गए थे, ठीक, उसके बाद शिफ्ट किया है गियर. माय लास्ट अटेम्प्ट वाज इन 2019, 1920. We have started shifting the gears now, but then yes, you can observe the gears. अगर पूरा ट्रेंड देखना है तो 2011 से, अगर शिफ्टिंग पैटर्न देखना है with respect to difficulty, it is 2019 and the later years. This is 2011 question. ठीक है, ये तो बहुत easy लगेगा आप. That what are asteroid, what are comet, what is? Please read out the question. I'll just read out. What is the difference between asteroid and comet? Asteroids are small rocky planetoids. ठीक है, छोटे छोटे मास डेब्रिस जो है उसी के लिए बात करें. While comet are formed from frozen gases held together by rocky and the metallic material. Second statement, asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter, while comets are mostly found between Venus and Mercury. Third, the comets show a glowing perceptible tail while asteroids do not. Which of the following statement is are correct? How many for A? Okay, we have 1, 2. सिर्फ 2 ही लोग हैं. How many for B? 1 and 3. Okay, we have some of you. How many for C? 3 only. How many for D? 1, 2, 3.
Okay, so we have A, B and D. Nobody for C. वैभव क्या है आंसर? पहले तो A 1 and 2 क्या सही लगा 2 में? कॉमेट. इज कॉमेट बिटवीन वीनस एंड मर्क्यूरी? कॉमेट का जनरली ओरिजिन तो कुइपर बेल्ट में होता है और फिर वो कहीं पे भी मिल सकता है टेल लेके, तो सिर्फ वीनस और मर्क्यूरी क्यों होगा? 2 इज नॉट रॉन्ग, देयरफॉर डी आल्सो गेट्स रॉन्ग. ठीक है, तो आंसर इज व्हाट? 1 and 3. आंसर इज 1 and 3. इट इज नॉट बिटवीन वीनस एंड मर्क्यूरी. होता तो लिखा लेते. ठीक है, ये वी ऑलरेडी सीन दिस. वी ऑलरेडी सीन दिस आल्सो. फाइन, सो वी वर गेटिंग यूज्ड टू दीस टर्म्स नाउ. अच्छा, पोल स्टार के बारे में भी लिख लो. पोल स्टार, राइट अबाउट द पोल स्टार. Write about the pole star. First point, pole star is a star. Pole star is a star. पोल्स देखो, पोल और स्टार यानी पोल से अलाइन होना चाहिए. ठीक है, नॉर्थ पोल से अलाइन है. पोल स्टार इज अ स्टार प्रेफरेबली ब्राइट, preferably bright, nearly aligned with the axis of earth, earth's north pole star is Polaris, 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 and is aligned approximately with the northern axis. Why are you not writing? हाँ, थोड़ा छूट गया. अरे तो आगे का तो लिखो. जो छूट गया बाजू वाले से पूछना. बाजू वाला लिख रहा है कि नहीं? लिखो. The north pole star is Polaris and is aligned with approximately with its north axis. बाजू वाले किस दिन काम आते हैं? पूछने के लिए ही काम आते हैं. ठीक है. It serves as preeminent star. It serves as a preeminent star in navigation. Navigation में हेल्प करता है. ठीक है. बेसिकली हम जनरली जब पोल स्टार का डेफिनेशन यूज करते हैं तब हम नॉर्थ पोल के लिए ही ज्यादा यूज करते हैं, साउथ पोल के लिए नहीं यूज करते हैं, बिकॉज इन दी साउथ पोल देयर इज नॉट मच ब्राइट स्टार दैट इज अलाइंड विथ दी सदर्न एक्सिस. सदर्न एक्सिस के साथ अलाइंड बहुत ज्यादा नहीं है एक ब्राइट स्टार, बट स्टिल देयर इज नियर टू इट, एक्सिस से थोड़ा सा ही पास है, दैट इज योर सिग्मा ऑक्टेंटिस. सिग्मा ऑक्टेंटिस भी यूज कर सकते हैं, but pole star generally we use it in the context of the north pole. That is the एक north दिख गया तो south के opposite होने ही वाला है, so that is more useful. फिर भी लिख लो. In south there is no star as useful as Polaris. Sigma octantis, SIGMA, Sigma octantis, SIGMA, Sigma octantis, OCTANTIS, octantis is the closest naked eye star, to the south celestial pole. The south pole is the closest naked eye star to the south pole. तो जो दिखता है हमको साउथ पोल में फिर भी दिखता है, that is your sigma octantis, but it is not always clearly visible and therefore it is not as useful for navigation as your Polaris or the north pole star is. ठीक है, so this was about your pole star. What we've seen the definition. Now what we'll do is we'll go into the theory part about the formation of the universe. आपको definition समझ गई, आपको terms समझ गए, we'll go into the
we'll go into the formation of universe, Big Bang theory and the other theory. ठीक है, उसके पहले I want you to attempt this MCQ. Probably you have no idea about it, but still try to solve this. Try to solve this. Try to solve this. This was asked in 2022. Okay, nobody calls out the answer, please. I will take the poll there. Just try to read the question. Just try to have some idea about it. Firstly, if there was a major solar storm, solar flare is nothing but very strong solar winds, very strong charged solar winds coming from sun is called as solar storm या solar flare. ठीक है, storm यानी हवा, तेज बहने वाली हवा, सन से बहुत तेज बहने वाली हवा, चार्ज पार्टिकल्स की, उसको बोल रहे हो सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म. व्हेन इट रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ? उसमें से क्या क्या हो सकता है आपके अर्थ पे? देयर आर 7 ऑप्शंस दैट आर गिवन. यू हैव जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल. मैं इसलिए हट रही हूँ ताकि लोगों को दिखे. अब ऑप्शंस नहीं विजिबल है. ओके, द ऑप्शंस आर 1, 2, 4 and 5, 2, 3, 5, 6, 7. You have 1, 3, 4, 6 and 7, and you have all of the above. All of the A, B, C and okay. So GPS and navigation could fail. Tsunami could occur at the equatorial regions. Power could be damaged. Intense auroras could occur over much of the earth. Okay. Forest fire could take place over much of the planet. Orbits of the satellite could be disturbed. Shortwave radio communication of the aircraft flying over the polar regions could be interrupted. How many for A? अरे करो, रेज करो हैंड. व्हाई आर यू स्कैर्ड? ए. आई एम रेजिंग फॉर ए. हाउ मेनी फॉर ए? ट्रस्ट ही नहीं है. हाउ मेनी फॉर बी? ओके, so what was the problem with A? How many for C? How many for D? क्या आंसर है आपका? आंसर ही नहीं है. क्या आंसर है? There's no answer. You're writing, completing the notes. You're writing the question. अरे 2022 का मिल जाएगा. ठीक है, कल से हैंडआउट्स भी दे दूंगी. Don't write the question. 2022 Google search, copy paste, Word document, print it. That will help you more. Fine. बताओ, I need answer. बताओ. ऐसे ही बोल दो ABCD, जो मन में अच्छा लगे. A, C, you win. C. ठीक है, इसको बोलते हैं लक. Tsunami can tsunami occur? What is tsunami? Tsunami is massive displacement of water. Massive displacement of water because of landslides, because of underground, because the underwater volcano, because of tectonic movements. तो सुनामी क्या होता है? There should be massive displacement of the water because of tectonic factors. Tectonic पता है ना? The movement of the plates. Because of landslides or because of the undersea volcano. तो सुनामी क्यों occur हो जाएगी? Solar flare यानी क्या? बहुत charged particles आ रहे हैं. Sun is throwing charged wind, charged particles. What will these charged particles do? They will interact with my Earth's atmosphere. As it interacts with my Earth's atmosphere, what will happen? They will try to create some disturbance in the Earth's atmosphere. As there is disturbance in the Earth's atmosphere, there is a magnetic field. जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके साथ डिस्टर्ब करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसके कारण नेविगेशन पे सबसे पहले इफेक्ट होगा. मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिस्टर्ब, नेविगेशन वुड बी डिस्टर्ब. तो नेविगेशन पे तो इफेक्ट होगा. तो नेविगेशन, जीपीएस कुड फेल, नेविगेशन कुड फेल, द power grids could be damaged. There is magnetic field that is changing, the power grids could also be damaged. Intense auroras, we will see what is auroras. The bright light at the polar star
is called as auroras. That is because the sun, solar winds interact with the atmosphere. When the solar winds interacts with the atmosphere, there are bright lights in the pole region. That is called as auroras. तो उस पे भी फर्क पड़ सकता है. Forest fire could occur over much of the planet. ठीक है, much of the planet, सारे planet पे forest fire होगी. That is wrong. Can forest fire occur? Yes. Can forest fire occur much of the planet? We cannot be sure of. In any case, second option तो गलत है. See, when there is pressure difference and temperature difference, it can affect waves. It can affect tides. Tide भी नहीं, waves ही affect होगी. Ocean currents भी affect हो सकते हैं. See, on the ocean, you have ocean currents. Temperature difference can affect the ocean currents. Pressure difference can affect the tides or the waves, not the tides, waves or the ocean currents. But to say that will affect tsunami, that is not a very correct thing, because tsunami's relationship is with respect to tectonic, with respect to massive displacement of the water. That is the idea. Okay. समझ आया? सुनामी नहीं हो पाएगा. करंट्स पे हो सकता है, यस. वेव्स पे हो सकता है, यस, बट नॉट सुनामी वेव्स पर से. So this is wrong. And if you eliminate, मुझे बोलने में भी वो लग रहा है, 2, you have the answer there. So 1, 3, 4, 6 and 7. ठीक है. So at least now, see, I do not know how will they play with this in the next time, but at least have an idea about what are the themes that are being asked as we are covering the topic. Now at least you have an idea that in the solar system they once asked question on comet, they once asked question on meteoroid, they once asked application based question, CSAT question on pole star. ठीक है, वो direction वाला question था, that was data interpretation. ठीक है, तो वो direction वाला question pole star पे पूछा है. एक बार solar flare को link कर दिया बाकी सारी चीजों से. Even if you are not able to solve 100% of the question, at least you will have an idea about what is solar flare, what is auroras. You will have an idea about what is aurora. At least जो क्वेश्चन देख रहे हैं उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो आज तक किया है एग्जाम के पहले कि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था, इस बार नहीं पूछेगा. इंजीनियरिंग में तो यही किया है. तो एटलीस्ट रिवर्स इंजीनियरिंग करके यूज दीज क्वेश्चंस आल्सो फॉर लर्निंग व्हाट इज अरोरा, व्हाई इज इट आस्किंग मी, व्हाई इज इट, सी क्वेश्चंस लाइक द many of the coal plants are established in the water stressed district. This time was the question that none of the coal plants are there in the water stressed district. तो अब जब सर्च करते हो, जब आप देखते हो कि 1/3 of the coal plants are in the water stressed district, this also enable you to write some fact in your answers. When you say what are the problems of coal, what are the problems of coal plants, write this fact that 1/3 of the plants are in water stressed district. कौन से ज्ञान को कहाँ यूज करोगे वो स्किल सीखनी है. तो ये क्वेश्चंस भी जब सॉल्व करोगे आफ्टर दिस ऑल्सो, और यू आर लुकिंग एट एनडी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और सीडीएस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ट्राई टू लर्न फ्रॉम दी क्वेश्चंस. अप्रोच बना लो एग्जाम की तरफ, ठीक है, एटीट्यूड बना लो, क्यूरियस बन जाओ, बाद में और भी चलता रहेगा. ठीक है, यू विल कीप ऑन लर्निंग इन दिस वन फुल ईयर. इफ यू हैव दिस माइंडसेट यू विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन एज कंपेयर टू दी others who are preparing for the examination. So don't simply say कि यार एलिमिनेशन खत्म हो गया तो मैं क्या करूं, मतलब अब सब कुछ रट्टा ही मारना पड़ेगा. क्यूरियस माइंडसेट से करो. जब ये भी सॉल्व करो तो क्यूरियस रहो और लिंकेजेस बनाओ. हैव दैट एटीट्यूड फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, दिस इज अबाउट द क्वेश्चन दैट वी हैव डन. राइट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स. गिव द हेडिंग. अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स. ये ठीक है, आपका जो सोलर फ्लेयर होता है वो अर्थ के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नेटिक लाइन के साथ अर्थ के रिएक्ट करता है. ठीक है, so write about formation of universe. Formation of universe. First heading, first point, not much is known. Not much is known about the formation of universe. Not much is known about the formation of universe. Not much is known about the formation of universe. ज्यादा कुछ पता नहीं है. ठीक है, थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स हेडिंग दिया था, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें, अभी भी कंप्लीटली अंडरस्टूड
नहीं है. We do not still completely understand about the formation of universe. One of the most accepted theory is Big Bang theory. वो सबसे ज्यादा accepted theory है. But अगर Big Bang theory को भी अगर पता है, what does the Big Bang theory says? It says there was a tiny ball. The tiny ball had infinite density, had infinite mass. बहुत ज्यादा, इतने छोटे बॉल में काफी मास है, इतने छोटे बॉल में काफी डेंसिटी है. It has low volume, tiny ball है, low volume, massive and infinite density, massive and infinite mass. What happens? This ball starts exploding. As the ball starts exploding, there is creation of matter. As there is creation of matter and spread of matter, you have the formation of galaxies. As the galaxies form, now the galaxies are moving apart. यही है बिग बैंग थ्योरी. छोटा सा बॉल था जिसमें मैसिव मास था, मैसिव डेंसिटी थी, लो वॉल्यूम था, वो एक्सप्लोड हुआ तो मैटर बना तो गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज एक दूसरे से अभी भी दूर जाती जा रही है. सब कुछ एक साथ था, अब धीरे धीरे दूर जाती जा रही है. बट what was before the ball? Why did the ball explode? Is there a possibility that again everything can fall and become a part of one ball? We cannot say it for sure. So आपको एक theory पता है, but not necessarily that all the questions have been answered. So the formation of universe is not still completely understood. ठीक है, तो हमने theory of universe या origin of universe लिखाया. उसमें first point बोल रहे हैं it is not completely understood, and there are many theories about the formation of universe, and there are many theories about the formation of universe, like steady state theory, like the steady, STEADY, steady state theory. ये थ्योरी क्या बोलती है? यू नीड नॉट राइट इट, बस लिसन. स्टेडी स्टेट है, यानी देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड. द यूनिवर्स हैज ऑलरेडी एक्सिस्टेड द वे वी सी इट टुडे. कोई बिगिनिंग नहीं हुई, कोई एंड नहीं हुई. इट हैज बीन इन द स्टेडी स्टेट, इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस. तो स्टेडी स्टेट थ्योरी थी that there is no formation, there is no beginning, there is no end. The overall size and mass of universe has always remained constant, and it will always remain constant at any point of time. तो steady state, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा ही दिख रहा है. ठीक है, अगर नए स्टार्स और गैलेक्सीज बढ़ रहे हैं तो पुराने स्टार्स और गैलेक्सीज खत्म हो रहे हैं. तो सेम मास है, सेम कॉन्स्टेंसी है, कोई बिगिनिंग नहीं, कोई फॉर्मेशन नहीं, कोई एंड नहीं. दैट इज योर स्टेडी स्टेट थ्योरी. सेकेंड थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी. Pulsating theory, PULSATING, pulsating theory. Pulsating theory का मतलब पल्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है. That it says कि the universe is always in a state of expansion. There will be contraction. Again it will expand, again it will contract. And it says जो Big Bang बोल रहे हो, it is just one phase. It is the one phase where the things have expanded and it will contract. That is for sure. That is pulsating theory. And the third theory is Big Bang theory. ठीक है, so write about Big Bang theory. Big Bang theory. First point, it was proposed by George, GEORGES. It was proposed by George, GEORGES, George Lemaitre, LEMAI TRE. जॉर्ज लेमेत्रे ने ये दिया था in 1927. As per Big Bang theory, when is the universe formed? कितने साल पहले? 13.7 billion years ago. When is the planet formed? 4.5 billion years ago. When is the sun formed? Sun बाद में बनेगा, planet पहले बनेंगे. Around 5 billion years ago, sun has been formed. Around 4.5 billion years ago, planet has been formed. Around 13.7 billion years ago, universe has been formed. Universe बना,
सब 13.7, फिर सन बना, सन बनने के बाद फिर आपके धीरे धीरे प्लैनेट्स बने, ठीक है। तो लिखो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, 13.7 billion years ago, 13.7 billion years ago, universe was extremely compact. Universe was extremely compact and dense into singularity, in a singularity. ब्रैकेट में लिखिए, infinitely dense ball, infinitely dense ball with massive density, comma, huge mass and low volume. बेसिकली क्या बोल रहा है, 13.7 बिलियन अगो देयर वाज अ स्मॉल टाइनी बॉल, सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 यूपीएससी में, व्हाट डज द टर्म सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन एंड वन मोर टर्म वाज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, एंड वन ऑफ द ऑप्शन वाज गिवन फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। 2017 का क्वेश्चन पूछा है, द टर्म सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन एंड वन मोर टर्म, साइंस का क्वेश्चन था, इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो सिंगुलैरिटी टर्म पता होना चाहिए, क्या था, 13.7 billion years ago there was a small tiny ball with massive density, massive mass and low volume called as singularity. इसी में लिखिए, there was no mass, there was no matter, there was no matter, no space and no time. ना कोई मैटर था, ना कोई स्पेस था, ना कोई टाइम था। How many of you have seen that? महाभारत ही थी, मैं समय हूं, ठीक है। तो ये whenever I study this मुझे उसकी याद आती है, मैं समय हूं, ठीक है। उसके पहले कुछ नहीं था, वो बेसिकली टॉकिंग अबाउट बिग बैंग ओनली, कि मैंने सब देखा है। बिफोर बिग बैंग देयर वाज नो मैटर, नो स्पेस एंड नो टाइम, एंड राइट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो a cosmic explosion happened in bracket you can write big bang, bracket close, ठीक है। 13.7 billion years ago a cosmic explosion happened and the tiny ball expanded, and the tiny ball expanded in all direction, in all direction, creating a fabric of space, creating a fabric of space filled with energy and matter, filled with energy and matter. Bracket में लिखो, the matter was scared, the matter was scattered, the matter was scattered in the form of nebula, matter was scattered in the form of nebula, ठीक है। full stop, next point. From that time universe has started to expand, has started to expand and is still continuing. Right, next point. Hubble, 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 name of scientist, Hubble, scientist Hubble, in 1929 proposed that the galaxies are moving away
from each other. The galaxies are moving away from each other. Okay. This is called as the phenomena of gravity. Red shift. It is called as red shift. It is called as the phenomena of red shift. ठीक है, इसी में लिखे the rate of expansion of the star. The rate of expansion of the star is called as Hubble constant. Hubble, Hubble constant. Galaxies and stars, all of them, they are called as Hubble constant. जिस rate पे expand करते हैं उसको बोलते हो Hubble constant. Hubble constant. See, what happens is, if you know the spectrum of visible light किससे बनी होती है? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन. पहले इसको समझ लो, ठीक है. पहले एक छोटा टाइनी बॉल था. द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड. एज इट एक्सप्लोडेड क्रिएटेड अ फैब्रिक ऑफ स्पेस, मैटर एंड टाइम. उन्होंने फैब्रिक ऑफ स्पेस, मैटर एंड टाइम दिया. सब कुछ एक छोटे टाइनी बॉल में था. इट स्टार्टेड एक्सप्लोडिंग. एज इट एक्सप्लोड इट क्रिएट अ फैब्रिक. एक फैब्रिक ऑफ स्पेस बनाया, उस पे मैटर था, और फिर उसके बाद ही टाइम का शुरुआत हुआ. एंड दिस इज स्टिल, जैसे पहले एक्सपेंशन हुआ, अभी भी एक्सपेंशन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. आपको कैसे पता एक्सपेंशन हो रहा है? एक फिनोमेना पता पड़ा रेड शिफ्ट का. ठीक है, पहले सब टाइनी बॉल में था, एक फैब्रिक ऑफ स्पेस क्रिएट हुआ, देयर इज एक्सपेंशन दैट इज गोइंग ऑन. हाउ डू यू नो? देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज डॉक्टर हबल. ही एक्चुअली गेव अप द फिनोमेना ऑफ रेड शिफ्ट. इट इज लाइक, हाँ, तो काफी सारी चीजें हैं जो यूनिवर्स के बारे में अभी भी नहीं पता है. ठीक है, बट ओवरऑल ये एक आइडिया है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है. ठीक है, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स व्हिच वी डू नॉट नो अबाउट यूनिवर्स, बट दिस इज एन ओवरऑल एक्सेप्टेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. ठीक है, नाउ हाउ डू यू नो इट इज एक्सपैंडिंग? ही सेड देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड एज रेड शिफ्ट. व्हाट इज रेड शिफ्ट? अगर इसको नॉर्मल डेली लाइफ से समझें, इफ यू स्टैंडिंग लेट्स से ऑन अ traffic signal, suppose an ambulance has come. When the ambulance is coming from far off, जैसे जैसे पास आती है तो क्या होता है? ज्यादा साउंड सुनाई देती है. जैसे जैसे दूर जाती है तो साउंड क्या होता है? कम जाती है. इसको डॉपलर इफेक्ट भी कहते हैं. That when the source of a sound is coming near, there is change in the frequency, there is change in the sound. As it goes away, there is a change in the frequency, there is change in the sound. So frequency and wavelength का रिलेशन होता है. तो सिमिलरली डॉपलर इफेक्ट के जैसे ही यूनिवर्स पे यही देखा गया कि लाइट जैसे कोई चीज पास आएगी, इफ समथिंग इज कमिंग नियर, ठीक है, और समथिंग इज गोइंग फार ऑफ. इफ समथिंग इज गोइंग फार ऑफ, वी कॉल दिस एज रेड शिफ्ट. इफ समथिंग गोज नियर, यू डोंट कॉल इट एज वायलेट शिफ्ट. आप उसको वायलेट शिफ्ट नहीं बोलते हो, आप उसको क्या बोलते हो? ब्लू शिफ्ट बोलते हो. बिकॉज आवर आईज दे कैनॉट रिकॉग्नाइज indigo and the violet color. It does more recognizes the blue color. तो कोई चीज जब दूर जाती है उसको बोलते हैं red shift. Some things which are coming near, they are called as blue shift. So this phenomena was given by Dr. Hubble, and the rate at which they are moving, that mathematical calculation and the rate was also given by Dr. Hubble, and therefore it is called as Hubble constant. जिस rate पे जा रही है उसको बोलते हैं Hubble constant. दिया किसने था phenomena? Dr. Hubble ने. ठीक है, तो अगर कभी आ जाए द टर्म रिलेटेड टू रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट रिलेट्स टू व्हाट? इट इज अबाउट द चेंज इन द साइज ऑफ द यूनिवर्स, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स और द कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स. सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, 1 or 2 topics that are left for the today's day was rotation and revolution. Rotation, solar system में क्या क्या आता है? In solar system we have the phenomena of the terms. You have the formation of universe, you have the formation of the solar system. Formation of solar system है. इसके बाद movements of earth पे आते हैं. Movements of the earth, the 2 important movements of earth are rotation and revolution. What are rotation and revolution? Here you will see this. As earth rotates and revolves,
there are a lot of changes that have been created. The changes are formation of day and night, formation of seasons. रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण होता क्या है, डे और नाइट बनता है रोटेशन के कारण, रेवोल्यूशन के कारण बनता है सीजन्स. ठीक है, तो कल उसको स्टार्ट करेंगे. इस पे भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे एंड नॉट एज लेट एज 2021. दे आल्सो आस्क्ड क्वेश्चन ऑन 2021 में भी पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं. So this is about rotation, revolution. Before we move on to this, just have an idea of the question that they have asked. 2013 they asked one question about the rotation and revolution. 2019 they have asked a question. 2022 also they have asked a question. So तीन, अच्छा 2015 में भी related to solar system Goldilocks zone से question पूछा हुआ है. So 4-5 questions have been asked. Overall अगर solar system को देखें from 2011 to 2023 they have asked around 8 to 9 questions. कभी टर्म जनरली टर्म्स को लेके इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, रेड शिफ्ट एंड आपका एस्ट्रॉइड, कॉमेट, पोल स्टार, तो जनरली टर्म्स को लेके पूछा हुआ है. इवन मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था इन 2017. दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, हाउ विल जूनो मिशन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. क्वेश्चन 2017 में पूछा था, जूनो मिशन कैसे हमको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. So one question from mains, generally mains में नहीं पूछते सोलर सिस्टम, but they have asked one question. Juno mission GS paper 3 लगता है, but then they had linked to evolution of the earth and they had asked the question. ठीक है, तो terms related. और मेरा suggestion ये रहेगा, not only UPSC examination, बाकी सारे UPSC वाले ही जो पेपर क्रिएट करते हैं, मतलब NDA, CDS, CAPF, SCRA, ये सब एग्जामिनेशन में भी सोलर सिस्टम रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, हैव अ लुक एट इट. वेबसाइट पे ही क्वेश्चंस मिलते हैं, वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जस्ट हैव एन लुक एट. ठीक है, दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच.